Thereafter, Okay, sir. we'll be starting the session. Sure. Hello, Hello. Upasna. Yes, ma'am. Can we start now? Yes, yes. Okay. I welcome again. Once again welcome all of you on behalf of Center for Climate Change and Water Research, Suresh Gyan University, Jaipur, Rajasthan, on the sixth day of the Summer Winter School in Geospatial Science and Technology, Level 1 program sponsored by DST NGP. Now, let me introduce to our very first speaker, Dr. Thota Shivashankar sir. Dr. Shivashankar sir is currently working as an assistant professor in Geographic Information System area in IIT University, India. He received his MTech degree in remote sensing from Andhra University and PhD degree on microwave remote sensing from IIT ISM Dhanbad while he was working at the Indian Institute of Remote Sensing ISRO. His primary research focuses on the use of microwave remote sensing for natural resource management and disaster management application. Prior to this, he worked as a research scholar from an UAM project titled Monitoring of Crop Growth and Soil Moisture Retrieval using Reset One hybrid polarimetric SAR data at the Indian Institute of Remote Sensing (ISRO). He also worked as a research scientist at the Northeastern Space Application Center, Department of Science, Umiam, Shillong, Meghalaya. He has over more than 16 publications in peer-reviewed journals and international conferences. So we are very delighted to have you here and would like to welcome you to start with your training session. Thank you, sir. Thank you. Thanks for the introduction. Shall I share my screen? Yes, sir. Yeah. Hope my screen is visible to everyone. Yes, sir. Yeah. Thank you. Uh, Good morning, everyone. So today we will be going to have an introduction to spatial analysis, and we'll see few applications about in regard to the spatial analysis context. Okay. So this presentation will have the contents of introduction, what is this spatial analysis, and why do we need to do spatial analysis, as the spatial
analysis is supposed to be carried over some sort of a data. Okay, in GIS we have spatial data, two commonly, broadly, two different data sets, two different model types of data. So which is, one is raster and the other one is vector. So we'll have a look into raster based spatial analysis and vector based spatial analysis, and further introduction to multi-criteria analysis. So what are these, and how it actually, what is the flow of multi-criteria analysis, and further have a look into the application context of spatial analysis. So first thing, what is spatial analysis? Okay, so when you look into a map, uh, like it's just a data in general. Okay, so you have to retrieve some sort of information and understand its patterns, especially how the whatever the how the features are distributed spatially, and what type of patterns are, to understand the spatial data, that is, that we call it as spatial analysis. So let us take an example. So here I have showing you a picture of, on the left hand side of the presentation. So if you see, there are few objects with an X, Y, Z. Okay. So if someone asks you, I mean, to this is just a data. Okay. So what type of information, or I mean, what type of patterns that you analyzed from this data? Okay. So let us think about it. The first context is, like, if you look at the X object, X feature. So which is actually coming in a diagonal form, and from northwest to southeast, which is actually following with the same size and shape. I mean, shape is the pattern. Okay, so with the same size basically. Okay, whereas Y, if you look at the Y, it's almost horizontal. Okay, and whereas it is always near to X, from while you are moving from east to west, and like the size is same. And the third pattern, I mean, third feature, which is Z, if you look into it, so which is having, as you move from like west to east, so the size is getting increased, and it is not associated with any other feature. I mean, it is randomly distributed, but the size is distributing. Okay, so these such kind of information, patterns, and informations can be retrieved from the, by using spatial analysis. Coming to its importance, why do we need spatial analysis? So spatial analysis helps to determine relationships of your any date of any feature. Okay, how it is actually distributed, and how it is associated with other features, and to understand and describe locations and events. This also helps in detect and quantify patterns, and how it is actually, when you look into the, when we go move on to space applications part, then you may able to understand, I mean, what are these aspects of it, to even make predictions that helps this spatial analysis, and further even optimum, to find optimum routes and locations for various aspects, site suitability analysis, as well as, I mean, like even our basic Google Maps and all those actually works with the spatial analysis. So when you look into the history, so where it has started, and a simple example of John Snow's, I mean, cholera analysis data. Like if you, this is a modern data, I mean, which is actually the older version map has been updated in by a like blogger. Okay, so Robin's blog, and he has used, I mean, modern GIS tools and make it a colorful map. So you, if you see, these are the blue color dots are the pumps, water pumps in New York, and these are the deaths, I mean, that were identified, observed during the cholera epidemic. So when you try to have a look into these patterns, so most of the cholera deaths occurred at a specific
water pump, and which is actually easy to understand, I mean, when you go with the spatial analysis. So based on which, I mean, like John Snows has identified the problem, I mean, which has caused cholera, and this was also resolved, I mean, based on these analysis. So as I have discussed earlier, so the spatial data is common broadly been in the two different forms. One is in the raster format and the other one is in the vector format. So the real world can be like made it into as a raster image as well as a vector format. So the raster format, I mean, where we can use uh, like when you have a field of continuous information like air quality or some sort of temperature, like even like soil moisture and such sort of informations has a continuous over the space, having the spatial distribution. So those features can be modeled in the raster format, effectively modeled in the raster format. Whereas the vector format, the features, I mean, which are discrete, like road network or like drainage, lineaments, these are having a linear features or a polygon, like if you have a water body. So these are not continuous features over spatially. So those features can be like made it in the vector format. So let us move on to one to one. So coming to the raster data, so what type of analysis can be carried over raster data sets? So commonly measurement, local operations, focal operations, zonal operations, global operations, and spatial interpolation. So these are the common spatial analysis tools that are being using over raster datasets. So let us move on to one by one of these analysis. What are those, and what type of analysis can be carried? So when you look into the measurement point of view, so this is a simplest form of, I mean, raster image, I mean, that I try to like take an example. Okay, so each square is a pixel. Assume it as each square is as a pixel, and here the measurement can be carried in different ways. Okay, so commonly Euclidean distance and Manhattan distance are commonly being used to measure distance between 2 points over raster datasets. Okay, coming to Euclidean distance, which is actually a shortest distance between 2 points. Let us consider, I mean, these are the two different points, P1 and P2. Okay, so if you try to measure the distance between these 2 points, the green line indicates the Euclidean distance, which is the shortest path, I mean, from diagonal shortest path of the between 2 points. Whereas coming to the Manhattan distance, which is actually followed either horizontally or vertically. Okay, the roots, uh, like when it comes to the Euclidean distance, you will be having only one Euclidean distance path uh, between 2 points over a raster datasets. Whereas when you try to have a Manhattan distance, it can be have multiple paths with the same distance. So whether you go to the red line, follow the red line or blue line or yellow line, you will be getting up. You will be ending up with the same distance between P1 and P2. So this is the basic difference. So this also helps to identify area as well as perimeter of a feature or a specific area, specific object. Okay, so when you look into the area context, the side square, as it is a square pixel usually, so it like if the size of the pixel is a, then the area become a square. So similarly, I mean, when you go into the perimeter context, I mean, you can have the 4a. Okay, this can be measured using the when it comes to the raster data set.
So similar applications are similar sort of measurement. If you go into the vector data analysis, so there the area and perimeter can be you can have the point, polygon, line and polygon. So even in the polygon, I mean, which is actually connected with lines between different points. Okay, so these line lengths can be like added to each other, and you will be ending up with the perimeter of an object or feature. And whereas, I mean, when you go into the area context, you will be your object is being subdivided into different geometrical segments, and the area has been measured. So as we have discussed, I mean, this raster analysis, where we have local, focal, global, journal and global operations. So we'll go into the one by one. What is local operations? Local operations actually indicate it is actually been carried over a pixel level. Okay, so if this is a simplest example of arithmetic operations, okay, at the local level. So here I have considered a matrix and b it's a matrix, I mean, which we can even, I mean, define it as a image. So these raster data sets, I mean, whether you go with the arithmetic operation of a plus 10, so it is actually been added at every pixel level. Okay, so 5, it becomes 15, 2, it will become 12, 6, it will become 16. Okay, so when you go, you have, I mean, one more operation, a plus b. Uh, Here you have a matrix of A and B matrix. So this operation A plus B happens between pixel by pixel, the first pixel of A and the first pixel of B. Go with the operation of summation, okay, addition. 5 plus 4 become 9. And similarly, I mean, as you move on to the another pixel, second pixel, third pixel, fourth pixel, I mean, you will be adding the pixel level. And similarly, I mean, you can do a number of operations, like even like a minus b or a plus b. Such kind of operations usually been when you do when you try to measure ndva, ndwi, such sort of indices, I mean, from the raster datasets. Such kind of local operations are extensively being used. So there are other operations like Boolean operations. So here it is mostly like a logical operations. I mean, where you can use and, or, not, or XOR. So like each operation has a different meaning. Okay. So when it comes to the end means, I mean, where you have both A and B segments features. Okay, whereas A or B indicates the any one or both of these features A and B, whereas A not B indicates the feature A is existing, but I mean feature B is not there. Okay, which can also be written as A minus B, whereas A XOR B actually indicates any one but not both. Okay, so which can also be rewritten as a plus b minus a and b. So here, I mean, you can easily to get a basic understanding about how these logics have been happening, which is actually given in the binary form. So considering a as, I mean, zero indicates, I mean, it is not existing, I mean, over the specific location, and one actually indicates if it is existing. So zero, when you have a 0 0 in the case of A and B, so you will be end up with 0. Okay, I mean, as A and B is actually looking for both A and B are supposed to be existing. So only you will be having the positive response, I mean, when both A and B are there. And whereas A or B, any one or both need to be there. And A not B actually indicates, I mean, where A is existing but not B. So this is the only case. And when it comes to the A XOR B, so here, as we
shown in the figure. So any one, but not both. So here, I mean, we get the responses as we have only any one, either A or B or one. But when you have both zero or I mean both one, in those cases you will be end up with zero. So move on to focal operations. So focal operations actually works with kernels. So here I have considered a image, okay, the center matrix, and here I have taken it into a 3 by 3 segment. So this kernel 3 by 3 will have operations like one such thing is central cell. I have just I mean replaced with all these 3 by 3 kernel, replaced with a center pixel. So which is actually 3 in the first kernel case, and the second kernel case is 2, and third kernel is 2, and fourth kernel is 2. This is the function. When you move, there is I mean one more case, I mean average, uh, where I mean you will be adding up all these pixel values divided by the number of pixels. So that then you will be ending up with the 1 2 2 1. And similarly you can even have so sort of I mean multiple operations. These operations actually being carried over focal operations, okay, defined kernel sizes. So when you move on to zonal operations, here the entire image has been divided into zone level. So I'm considering it, I mean, like here you can see there is uh, 1 2 3 sort of I mean five, 5 categories are been given in an image, and with a different color zones, so I mean which actually gives the like which zone it actually indicates. So these zones are being area wise added, okay. So as I mean we have 1 pixels in a green color. So these zones are added into 5, and when you do the area operation. So similarly, I mean when you move on to the like 2, like I mean the region zonal levels 2, so it has 4 different 4 pixels. So that is why I mean 4 area has been given over the zone of 2 zones. And similarly, you can even go with the perimeter function. And further, you can even analyze the zonal centroids. So this helps in most of the to analyze the patterns, which like which location it is actually uh, like focused. Like if you look into the COVID cases point of view, so how the cases have been distributed in India or a global context, and these uh, point level patterns, I mean, can be used to identify the centroid of those points that that gives you an information about even now you are uh, having a look at the different variants of COVID-19. So these COVID-19 variants, like how these are centroids, how these COVID variants are distributed over the globe, and where actually is having the influence hotspots, so that can be easily identified using such sort of operations. So when you look into the global context, so far I mean you have seen like pixel level and focal level and then zonal level. So the moving to the global operations, these operations actually work on entire image. I mean the information whatever I mean you are going to get put it over the output layer is actually an influence of all pixels in the input image. So that's why I mean we call it as global operations. A basic example for the global operations are region group and Euclidean distance. So let us see, I mean, how this region group works. So if you consider a grid input, I mean, this is a example of input data. So if you are going to get the output of, I mean,
you have used this region group operation, okay, tool to get this final output. So how it actually ended up, I mean, with such sort of information. So starting with the first pixel, okay, first row, first column, it has 4 value. So it doesn't have any other uh, connected 4 pixel. So that's why it is being given as 1. Whereas the other value, I mean other, when it is moving to the other pixel, so it has a connection with 3 value over a L shape, I mean like inverse L shape. So these pixels are being replaced with the another value, and the third pixel is having the connection with 4, with the value of 4 in the input grid. So here, I mean, it has been replaced with the 3 values, and the fourth one, which is having the 3 value of, I mean, like connected, I mean, pixels. So these are being replaced by the 4. So the output information value attribute table, if you here look into it, the value is the output region. What is the first region is having the count of 1 pixel, and which is actually a link of input pixel with input pixel value with 4. And similarly move on to the second and third and fourth. Coming to the Euclidean distance, here you have some sort of data, okay, where you are trying to measure each pixel, I mean how far it is from the nearest like feature, okay. So here the first, coming to the this unknown this empty pixel, I mean you have, if you see in it, so here, uh, considering the first pixel, it has 1 value, means, I mean it is already it is the existing feature, so it has been replaced with this 0. Whereas when you move on to the uh, first column, second row, so it has none, no pixel, so means, I mean it has to identify the nearest feature. So where it is, so on the left side and right side, I mean you are having the 1 pixel apart, so that is why it is replaced with the 1. And as you move on, if you see particularly 1.4, okay, so why it has come to 1.4, the diagonal element, okay. So the diagonal element is having, if it is from the center, okay, if you assume, I mean this is like you are trying to identify from center of the pixel to center of the another pixel, so it is having 1 pixel complete, like length. Whereas if you look into the diagonal element, you have 1 pixel in the horizontal and 1 pixel in the vertical. So Euclidean distance always look into the shortest path, which is square root of x, the difference in x square and difference in y axis. Okay, so like this is actually 1 square plus 1 square, I mean square root of 2. That is the reason, I mean it is end up with the 1.4. Okay. There are, I mean, several such other global functions that include cost distance, cost path, and Euclidean direction, and slice, etc. Spatial interpolation are one such important, I mean, spatial analysis tools. So here it actually try to identify the unknown pixel value based on the known pixel values. So assume, I mean such sort of applications are commonly being used in the weather prediction, weather analysis. You usually have automatic weather stations at a few locations over uh, global level as well as Indian region. Okay, so these few locations were being recorded continuously, and based on these known points, temperature or air quality or any other parameter, so uh, you can make use of this spatial interpolation tool and get the spatial distribution of a particular parameter. It can be temperature or air quality or any such sort of parameter. So here, I mean, there are several tools available. I mean, several techniques available to do such sort of application. One such method is inverse distance weighted.
and triggering techniques, local polynomial interpolation, radial Bayes function. So these are the few techniques which are available for spatial interpolation process. So I'm not going into the details of this spatial interpolation techniques because the basic overview of the spatial analysis I'm trying to give you. So little more discussion need to be happened over these techniques. So, so far we have tried to analyze, try to understand raster spatial analysis. Now we will look into the vector spatial analysis. So there are common vector spatial analysis are reclassify, dissolve, and merge and measuring. Okay, measuring. I mean, as we have discussed in the earlier, also the same sort of similar measuring tools, buffering, overlay operations, feature manipulation tools, and connectivity functions. So let us see what are these common vector spatial analysis tools. So here I have taken to explain you the reclassify, dissolve, and merge tools. I have considered a soil type map. Okay, so with a uh, basic soil type and potentials of D and B, D and F. Okay, so like there are uh, like three different soil types. Okay, broad categories A, B, and C, in which they have it has a potentials of D and F. Two different like subsoil types. Let us assume, and you want to identify the broad category of soil types. So which means you need to first reclassify these subsoil types into the broad classified soil types. So here AD has been reclassified into a broad category into A type soil type. So once you reclassify it, these operations can be further move on to either merge or dissolve. So the dissolve operation actually try to do uh, wherever the same features are there, okay, which is having the same attribute value. So between these two features there is an arc. This is usually get dissolved and these two features been merged into as a one feature. So that operation it actually takes place. So another such vector analysis tool is buffering. So mostly the vector data is in the format of either point, line, or polygon. So when you have a look into the buffering context of point, line, and polygon, how it actually appears, the point is always been buffered within a circular manner, and linear features are being buffered based on its shape. Okay, as you can see it in the picture, and whereas the polygon features, as its boundary uh, line, so it is actually being buffered to a specific extent. So why do we need is it required to do such sort of buffering? Yeah. So like if you take any specific incident like even like COVID cases, so wherever we have positive case over our region, so they quarantine some sort they identify some sort of some region and try to quarantine. Why? Because they try to identify this positive case may have uh, the influence on this much region. So those regions have been quarantined or like had a like curfew and so sort of strict regulations been happening over those hotspot areas. Okay, so to do such sort of operations, you need to have buffering tool. There are various types of buffering tools. So let us assume you have a point layer information, as you can see over here. So this is simple buffer overlap dissolved. So here, wherever you have overlaps from the multiple buffers, so those are being dissolved and make it a single feature. Okay, so the other case, there is another case, compound buffer overlap identified. So here we have like
we have overlapped portions. Those are being identified separately and given the different feature information. So such sort of overlap buffering can also be done. And the other case can also be carried with the nested buffers. So you can define, different distance. You can give different distances to make a multiple nested buffers. So with which, you can even define the like high influencing area and lower, moderate, lower, and very lower. Such sort of buffer zones can be created using such sort of nested buffers. Coming to overlay functions, there are like commonly being used. Identity, intersect, symmetric difference, union, and update. Each one of these tools have its own application, and it is unique in its own way. So if you look into the identity tool, so which actually having the feature, like I'm considering the same input feature and the same output feature, to show you, how these are different from with each other. Okay, so considering this input feature and out like overlay feature, so the output will come in such a way. The identity matrix will have the input, will have the spatial distribution as input features. However, the features are being divided into different features, based on the overlay features. As you can see over here, the circles, wherever we have circles, so the actually square boxes are being divided into different arcs by just because of this overlay features. And when you look into the intersect function, so it has where you have both input feature and overlay features. There only, you are getting the output result. Okay, so whereas symmetric difference has the wherever you have both input feature and overlay feature, those have been erased from the in the result. And like in XOR operation, you can call it as, so either input feature need to be there or output overlay feature, but not both. Okay, so coming to union, it's a sort of OR operation in the logical Boolean function. So you can, any one or both can be there in the union. So that is the reason, you have the resultant function with both squares as well as circles. And coming to the update tool, so it actually just update the input feature, like wherever it has intersection, wherever it has overlap, to say. So wherever it gets overlap, as you can see, these features have been updated with the overlay features. So there are few other tools like feature manipulation tools. Okay, so these are few common tools commonly being used in this vector spatial analysis. Appends, which actually try to join the both two different feature information, like as you can see over here. Okay, coming to the clip operation, it actually does the in consider the input data, and based on the clip feature, it actually uh, like separate out the input data set. And coming to the select operation, you can choose a specific feature and extract it to it as a another data. And splitting is a tool, where you can define the zones, and zone wise you can able to like clip your input features. Connectivity functions are being commonly being used in the network analysis. So here, you can like you have various functions. So contiguity functions, network analytic functions, visibility functions. So in the network analysis, as you might be aware of it, you can identify the nearest like
a specific zone. Okay, let us assume, I mean, you are staying at a place and you want to you want to search in Google Maps, I mean, the nearest ATM or nearest hospital or nearest hotel or restaurant. Okay, so that all can be done based on the connectivity functions, like how near it is, and like based on the distance measured, I mean, based on the route map. So those are being given and displayed over the your analysis. Coming to the visibility functions, like, I mean, if you have a DEM, okay, and you are trying to uh, establish a net, you want to build a network cell tower, okay, to have a good connectivity. So where these cell towers are supposed to be placed, okay, so the cell towers works, I mean, when you have the line of sight visibility. So that's why, I mean, you commonly these cell towers have been placed over a high level areas, okay, to have a good visibility. Such visibility functions, I mean, like which all points are having good visibility, those also can be analyzed by using this connectivity functions, um, with the DEM as a background, as an input feature. Multi-criteria analysis. So this is one of the important application of spatial analysis. Okay. Here, I mean, you have a specific over a specific area, you have different data sets. It might be your satellite imagery, base map, land cover information, demographs, wetlands, like different thematic layers basically. Okay, these thematic layers are can be analyzed and identify is like site suitability analysis, sort of things can be done using the multi-criteria analysis, for which you need to follow the process of first setting the criteria, and then you will be setting the scores of importance of these uh, like thematic layers, and weighing them and giving the ranks to each one of it, and you will be finally ending up with the doing the multi-criteria overlay analysis. So such overlay analysis, there are, I mean, n number of like such kind of overlay analysis, like analytical hierarchy process. Okay, even weighted overlay analysis, you can define your own weights and you can do it, uh, like frequency ratioing, and like even advanced techniques like machine learning, artificial intelligence, deep learning based techniques can be used to identify these weights of each uh, thematic layer, and continue try to identify the best suit or optimum route. Such sort of things can be analyzed. Let us have a look into a few applications of spatial analysis. I mean, what we have so far seen, I mean, the theoretical context. So this is a study of, I mean, Kumar and Bansal 2016, where, I mean, they have identified to select a building in a hilly region, like how to uh, select a safe site for a construction. Okay, so they have considered, I mean, different input data sets, and from which they have tried to extract, I mean, several informations, like from DEM they try to get this elevation, slope, and the background slope. Okay, so and further information from the land use land cover information, like they have extracted road maps, existing buildings, how power supply lines, and soil system. All these can be like mapped, and these are buffered with, I mean, some sort of influencing zones, I mean, like how far it is suitable, or, I mean, how near it is supposed to be. Okay, any building constructions you are going to do, so which need to be it should not be very close to the supply line. At the same time, it should not be very far also. At the same time, existing building, certainly, then where there are already existing building, I mean, you can't uh, like you need to have some distance between the existing buildings and the new building constructions. And soil system need to be understand, I mean, whether it is suitable for
to construct a building or not. So all these supposed to be considered, and these are being given with weights to each thematic layer, and further try to identify a safe site selection for building in hilly region. Here, we have here. This is a study of flood mapping and monitoring analysis. Uh, it is over Kaziranga National Park, okay, where we have used microwave data, Sentinel-1 synthetic aperture radar data to analyze 2017 information. And here, you can, once you classify the information, like you can even analyze how much area has been covered, has been flooded, and the non-flooded regions. And when you have a multi-temporal sort of flood inundation maps, you can even analyze which areas are continuously been flooding, and which areas are like getting flooded during the flood season, and the which areas are not getting flooded are safer, like which are land. Okay, so those areas can be identified, and these areas and perimeters can be analyzed, and do such sort of temporal analysis. As you can see, this is the area information over the Kaziranga National Park flood inundation from in the 2017 information year. So you can see there are two flood waves, like one in the uh, July, if I'm not wrong, and the other one is in the August. Okay, so in which the second flood wave was the intensive. Coming to lineament, there is one more application which is a lineament mapping. So here we have tried to make use of synthetic aperture radar data and try to analyze, try to identify linear features, geological lineaments, which has a major role in analyzing mineral explorations, as mineral mappings, as well as to understand like tectonical active information, from over a specific region. So such sort of analysis can be carried out. So for which you need to first enhance these geological lineament features from microwave data. So this enhancement process, this which is actually a raster data spatial analysis, okay, pattern. So these are been enhanced, and to try to identify from the based on different tools these linear features, and analyzed over different over our case study, okay, our study region, and we have published it in International Journal of Remote Sensing. This is a rose diagram. How these lineaments are distributed, or like how these lineaments are oriented in our study area, and other statistical informations can be uh, like measured, by making use of uh, this spatial analysis tools. This is one more study of about landslide identification. Most of the cases we are extensively been using optical data for landslide identification. However, uh, like particularly when you look into the Himalayan context, so most of these landslides usually been happen over monsoon timing. So that during that point of time, only microwave data can able to get it. So, however, uh, microwave data, like it's not well established. There are no well established approaches, to like automatically identify landslide patterns. So we have tried to analyze, how effectively synthetic aperture radar data can be used to identify landslides over a region. And we have also, and this is a case study of Sobir landslide in Sikkim. So that we have tried to analyze about rainfall patterns, and how the rainfall patterns have been happened over the during that point of time, and like how it actually appears over optical data, and how it actually appears in the micro data. So, so sort of
applications can be carried. Finding pleasant routes using GIS. So, like when you are trying to identify the shortest, uh, optimum route in the sense of it might be in the sense of shortest time, shortest distance, or pleasant routes. Okay, you can define it. In your own way and identify. Which route is most suitable for your particular purpose. Okay, so sort of analysis can be carried over these spatial analysis tools, and these are been commonly been using. Like we are even in our day-to-day life, we are uh, like frequently been using such sort of tools. Even in this recent pandemic time, COVID-19, GIS, ESRI India, in collaboration with NDMA, okay, National Disaster Management Authority, they have developed a GIS portal where they have shown daily COVID-19 cases, how they are distributed, and when you look into this temporal context, you can even analyze, how these patterns are changing, and like in which direction these patterns are getting distributed. So with which you can easily control, like you can even plan how to control this COVID sort of pandemic situation in this pandemic situation. And moreover, you like such sort of pandemic scenarios, you will be having limited resources, like in the context of available beds, or other facilities, hospital facilities, medical facilities. So such medical facilities can be effectively used and managed, like when you have such sort of platforms. This is all from my end. Like if you have any specific queries, we can address. Any questions, please? Yeah, it seems that nobody has a question. Yeah, please don't hesitate. Good morning, sir. Yeah, good morning. Good, sir. I don't have any question, but I just wanted to say that I know you from since when you were working in NISEC. I was there as an intern, Oh, and I also know Shwaganka ma'am too. So oh, yes, that's all I wanted to say. That today when I saw that you were coming, so I got excited that I'll be hearing from you once again. okay. Thank you. Thanks. Sir, hello, Toda Yeah. sir. Yes. Good morning, sir. My name is Sunil. Uh, Okay. I just wanted to have some little information, more information on the geometry types, what we have discussed in the proximity analysis Okay. and the network analysis. Like network analysis, when we do, is it can be done on the simple geometry types, or there is some specific geometry types when performing those operations? So, specific geometry, like, what do you mean simple geometry types? Like when Uh, when you said that network analysis. yeah. And suppose we have some lines only without any specific information or without any specific geometry type, like in GIS, we have polygon point line. Apart from Okay. this, we also have few other specific feature types. Okay. So is there any specific Like different usually requirement vector to data. perform? Yeah. Let me first like give you the glimpse of when you go with the network analysis, you have like geometry and topology. There are two different like terms. Which we usually commonly Yes. use. Okay. So geometry, in the sense, it doesn't have any relationships, or like it is just a feature. Okay, Yes. if you uh, run the topology, then this topologically corrected features can be make use of
make use for the network analysis. So if you don't run the topology tool, okay, so we can't do the network analysis properly. So I guess there is some specific requirement of relational information in the features. True. You need to have such information for network analysis. Yes, So yes, this is what in I was between, looking you for, can sir. simply call it This as is topological, removing topological errors. Topology is a tool where you can do so. You can make use of geometry information to topology information. You can convert it. okay. Okay, sir. Thank you. Yeah. Any more questions? Any of the participants? Sir, good morning. My name is Dr. Vikram Ranga. Good morning. The question is what Dr. Sunil was asking. Um, I think the question was that, for example, if we have nodes, if we have intersections of traffic Okay. intersections, Okay. then in those intersections or those crossings, we need to have information whether this is a U-turn or whether we can go in one direction or we can go in both directions Certainly, also. certainly, we need to have. That is the reason I have asked about the topology. So topology defines, you how it is connected and how what direction. The route is. One way or like which direction it is actually traveling. So that information need to be given. Okay. In generally, the vector information is simple geometry information. It doesn't have any like path. Okay, like whether it is a single one way or two way, like no information can be given in the geometry context. Yes, sir. It's the Uh, topology. It's very important for all other applications also Yeah. in vector sir, analysis. sir, why I ask this question means that when we do this topology operations in ArcGIS, we have two kind of topologies. One is normal topology and one is network topology. Yeah. So that is why I put this question: that is there any specific requirement for this network analysis? That is why. Sir, this network analysis actually this is not only for traffic. It can also be, for example, if we want to have a Wi-Fi network, or Yes. what the government of India is doing is to trying to connect each and every village. So in that case, we need to have a network of fibers. So that can Yes. also be. I think I do not know. I'm not expert in this. But if we want to plan this the network fiber network, then we need to do some network analysis. And in that case, the 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 properties of a node are completely different from properties of a node in a traffic intersection. Certainly. Yeah. So I think that was the question of Dr. Sunil, is that see, simple topology is that we know that whether Yeah. Yeah. Simple something is topology. connected or not, or it is outside of it, or the explicit relation between two features or Yeah. multiple features is topology. True. But apart from that, for example, in traffic analysis, we need to have some other informations also, like this, the intersections, that whether we can go, it's a U-turn or not, and on the basis of that, this whole shortest route network is calculated. I can simply show you. A few pictures. Okay. This is your. I'm just. Going through the slides. Okay. Like not giving much time to read. Okay. In generally, your linear features are in the geometric context, so it doesn't have any information. Okay. So the limitation is, you are not having any such sort of information regarding one-way streets or anything. Okay. Like which side it is actually falling, but when you run the topology, you will be having the directions.
Okay, so like it will have connectivity from one node to another node. I mean, how it is actually connected. So this information need to be there in, like, depending on your application basically. Okay, even if you go with the like f- optical fiber, so there, I mean, you need to have like from which node, I mean, it is actually getting distributed. Yes. Is it clear, or like any Yes, actually, we started doing some project on this this fiber net, Mhm. and we came to know that what this telecom companies, they use a completely different software from ArcGIS, and in that software they do have this network analysis, but they do it in a different way. And I mean, this, they go a little bit beyond this topology. I mean, this is what our Yeah, yeah, understanding was. certainly. Like depending on your requirement, certainly you have to do all these sort of analysis. It Yes. basically depends on your application, like what Yeah. application that you are doing. Accordingly, the tools may change. You may no need to Yes. do Yes. Yes. all Okay, the sir. Thank you tools, very much. all the applications, whatever we have discussed so far. Like it's not required, I mean, or mandatory to make use of each and every tool for your purpose or for every application. Yeah. True. 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 Okay, sir. Thank you very much. Yeah, thank you. Any other questions? So, on behalf of Center for Climate Change and Water Research, I'll be thanking Dr. Tota Shankar from NIIT University that he has spared his time and he has given his valuable inputs. And thanks a lot, sir, for your Uh, blessings. Thank you, sir. Have a Thanks great for. day ahead. Thank you. It is my pleasure, I mean, to be here and discuss, interact with you all. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Now, yeah, can you pause? Okay, our next speaker for today the program is Dr. Suraj Kumar Singh itself. So I'm again back because the other speaker has got some uh, medical treatment has to be done. Some because nowadays at any point of time anybody can has a medical issue. So today I'll be taking because there are two halves because all the prerequisite that has been given by DST we are following that. So there was two lectures on the same topic that is called as a spatial analysis. So I'll also continue with the same topic but with a different dimension. Okay. So I'll be sharing my slides. So I have to make a stopgap arrangement. I'm a fellow with a stopgap arrangement. So this later on I'll see. Can you see my slides? Yes, sir. Yes, sir. Okay, yesterday I have. Yes, sir, we can see. Okay, so give me 2 minutes because I have to search for my slides I made yesterday. So can you see my slides? Yes, sir. So already Yes, you sir. have seen that some of the basic definitions of the spatial analysis tool that already it has been discussed with Dr. Tota Shivsankar has given a brief, but I'll be going with a more detailed about what are the different kinds of raster and vector data model and structure, and thereafter various applications that what are the outputs if you're performing a union exercise or an interaction or a point in
line or point in polygon. So what the results you're supposed to have. So you can see by the term itself, GIS user should understand the difference between the spatial data. So always whenever we are talking about GIS, always remember we are talking about two data sets. Either that is spatial or it's non-spatial. So when we say spatial, we are confused with three different synonyms. Many times people feel like this is a synonyms, but they're different. So what are those? One is spatial data objects, other one is spatial data structure, and the third one is spatial data model. So today we'll be studying in detail about the various kinds of spatial data objects, structures, and spatial data models. So what do you mean by spatial data objects? That is very important, because until unless you're not having the theoretical understanding of the subject matter, if you are going to do practical directly, you will be a technical employee or technician. So as a scientist, always know what is the basic, and the basic says that the spatial data objects are digital representation of the real world identities. So obviously, yes, whenever you're recording any satellite data or drone data or whatever cartosat data, or you say team data, digital elevation model, whatever you're downloading from any of the sites or the data sets that you are recording it, that is what it is recording. Can anybody say ki what does the satellite image records and how it records? Anybody? Whether my voice is clear? Yes, sir. Those, Yes, sir, your voice is very clear. Sir, तो I think the satellites they have onboard systems, which we also call cameras, but they are not cameras in the ordinary sense of the word, much like we use in our mobile phones. But they are linear arrays of diodes where they can sense and capture the digital signature of a parcel of a land, and this parcel is represented as a pixel in our satellite image, and that pixel has a unique value. We call it digital number. So this is my understanding, sir. I do not yeah, know yeah, if it's yeah, correct. yeah. It's you're accurate, and that represents the real world identity. That's what I wanted to say. Ki whenever you are stating something, when you're saying something in form of satellite image, we are seeing it digitally. So that is the digital representation of the real world entities. Means whatever changes that has happened over a period of time in an area can be easily identified using the raster data sets, and that are in the form of digital representation of the real world entities. Means we are handing the data digitally, not any hard copy form we are doing. We're doing some digital observation, we'll be doing it. And they are the basic data units that can be used, because the prima focus of getting a data is not to overload your laptop or the data bank. Many times you see, when I was a student, and many people does they'll get a software, they will install in the laptop, they'll get a data, they'll store it. What to store, why to store, how to use? Because data, you can have any kind of data. You have a microwave data, you have a hyperspectral data, I'll be providing lidar data, but what is the use? The main important use is ki finally what the objective you have stated. Just like we have stated that you have to do a minor project. So until unless your problem statement is not clear, your resource gaps are not clear, you cannot frame your objective. And once you have framed your objective, those all the data sets what we are talking out, whether we are talking about primary data or secondary data, they are the data that will be used to justify our results, to provide a thrust to your results, to finally analyze it and finally give a solution to a problem. It can be a drinking water problem, it can be a water quality problem, it can be a forest fire problem, it can be flood forecasting, it can be urban modeling, whatever's come to your mind. Until unless you don't have the digital data, because you see, the government of India has stated digital India. So whenever you're saying digital India, the biggest tool that will help
to get this all the data set digitized into the real world entities will be geospatial technology. So the coming era totally belongs to my mind is the era of geospatial technology. So a person who is highly qualified, who is highly skilled in handling all the data sets, whether you are talking about drone data, whether you're talking about micro data, hyperspectral data, lidar data, because these are those data sets that are discovered, but yet there are many new technologies, there will be many new instruments, new softwares that will be evolved over the period of time. And the person who is regularly updating it, who is regularly analyzing those data sets, will be the leaders of tomorrow. So that's why it's important to have a basic understanding of the digital data. So they carry what those data carries. So they carry data about both geometric and thematic properties of the representation of the earth. So when we say geometric and we say thematic, so these two terms are very important because it stays about something important. So what does geometry says? Geometry says that whenever the data is recorded, it is prefixed to a particular location itself. Means it is static, it is not moving. So whenever you're doing for a multi-temporal data set for a particular reason, it has got a specific X and Y location. That's why you can have a multi-temporal data sets, change analysis, change detection, or any forecasting depending on the geometric property. And finally, all the data set all over the, whether you're doing any kind of raster analysis or whether you're doing any kind of vector data sets, you're trying to map the thematic layers from that data set. So those thematic, when I'm saying thematic means whenever there is the various kinds of maps, you prepare a base map, you prepare a theme map. Anybody who can elaborate what is the basic difference between a base map and a thematic map? Sir, base map is actually a normal map which say administration and its boundary, but thematic map provide a particular information about that area, like population data, population map, or rainfall map, and elevation map. This type. So what it means it is particular to a particular theme. Like when I give a title, land use, land cover. So there the only the properties pertaining to the land use features will be only stated. There I will not be talking about its height. There I will not be talking about its structure. There I will be not be talking about the various geomorphological units. So thematic maps is restricted to a particular theme. Like if you are preparing a geological map, you will concentrate yourself to a geological aspects only. There you will not mix up the geomorphology और land use की, उसमें हम ग्रेनाइट भी बना देते हैं, हम सेडिमेंट्री रॉक में आपका सैंडस्टोन भी बना दे रहे हैं और उसी में लिख दे रहे हैं कि भैया ये अर्बन एरिया है. नहीं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा. तो जब भी हम लोग ये डेटा लेते हैं, और बेसिक पर्पस इज टू क्रिएट द ज्योमेट्रिक एंड थीमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन. सो ये हो गया आपका. नेक्स्ट आया है स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर. तो स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है? स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर्स रेफर्स टू द मेथड्स. अगेन यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर, वहां हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, यहां हम लोग डेटा स्ट्रक्चर क्या करते हैं? मेथड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द स्पेशल डेटा with emphasis on the efficiency of storage and performance. तो जब भी मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो डेटा जाके आपके किस मेथड से सिस्टम में जाके स्टोर होता है और उसके स्टोरेज से कैसे आपके मशीनरी में, कैसे आपके सॉफ्टवेयर में परफॉर्मेंस में चेंज आता है, वो होता है स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर. तो आप देख सकते हो कि कैसे नाम वही है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया. जैसे स्ट्रक्चर जैसे घर बनाते हैं, तो अगर आप देखोगे कमर्शियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, स्लम्स है, उनका क्या है? स्ट्रक्चर अलग है. तो क्या है? स्ट्रक्चर अलग है तो उनकी फंक्शनिंग अलग है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, उनके लाइवलीहुड स्टाइल अलग है, उनकी बेसिक एमिनिटीज अलग है. वैसे ही जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं जीआईएस में, तो डिफरेंट मेथड्स है जिसके फॉर्म में डेटा स्टोर करेंगे अपने सिस्टम में. जैसे किसी ने जियो डेटाबेस बना दिया,
किसी ने शेप फाइल बनाया, किसी ने कुछ और बनाया। तो बेसिक पर्पस क्या हुआ, वो स्टोरेज है। और स्टोरेज किस में डिलीट करता है, परफॉर्मेंस में। जैसे मान लो कि हाई एंड जो लैपटॉप्स होते हैं वो क्या है, अच्छा क्यों परफॉर्म करते हैं, और एक लो एंड पुअर जो रैम है वो नहीं प्रोसेस कर पाता है। इट्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोसेसर। तो वो हार्डवेयर है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हम बोल रहे हैं वो आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो स्टोरेज है, जो डेटा हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो ऑब्टेन करेगा सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस करेगा, वो स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कैसे किस किस मेथड से डेटा स्टोर होता है। तो वो आगे अभी पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैं बस एक ब्रीफ दे रहा हूं, इन डिटेल अभी पढ़ाऊंगा। फिर नेक्स्ट आया स्पेशल डेटा मॉडल। तो अभी हमने पढ़ लिया है स्ट्रक्चर क्या हो गया, अब मॉडल्स क्या हो गया। तो स्पेशल डेटा मॉडल्स आर हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर दैट फोकसेस ऑन फॉर्मलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ह्यूमन यूज टू कॉन्सेप्चुलाइजेशन स्पेस की। जो भी हमारा इमेजिनेशन में है, जो भी हमारा रियल वर्ल्ड एंटाइटीज है, उसको रियल टाइम में मैप करना है, प्लॉट करना है, और दुनिया को एक फाइनल आउटपुट दिखाना है। तो वो तुम्हारे स्पेशल डेटा मॉडल्स में आ जाएंगे, जिसमें दो टाइप के मॉडल पर्टिकुलरली हम लोग यूज करते हैं, दैट इज रास्टर डेटा मॉडल एंड वेक्टर डेटा मॉडल। तो वो और आगे इन डिटेल पढ़ेंगे हम। सो स्पेशल डेटा मॉडल क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द लिंकेज बिटवीन द रियल वर्ल्ड डोमेन ऑफ ज्योग्राफिकल डेटा and the computer or GIS representation of features. That is the definition given by Marvel 1982, and that says it is used to organize a systematic file structure. जैसे मान लो कि आप किसी का अलमीरा खोलते हो, तो मेरे सर एक थे, चाहे जो हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर श्रुति गंगा, उनका अलमीरा खोलोगे, या जब अपन कोई फॉर्म भरते हैं, तो बहुत आदमी को देखोगे कि वो हैप्पीजार्ट फॉर्म को, अगर मान लो कहीं फॉर्म निकला है, आप भरते हो, तो फॉर्म भर के किसी और आदमी को भेजने के लिए क्या करते हैं, बहुत आदमी प्रिंट आउट निकाला और जहां मर्जी वो उसको स्ट्रक्चर किया और उसको भेज दिया। तो जो भी है, जैसे मान लो मैं एग्जामिनर हूं, मुझे चेक करना है कि भैया आपने ये चीज बोला कि मेरा पेपर ये है और यहाँ पब्लिकेशन हुआ, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि किस पेज में कहाँ है, उसकी डायरेक्टरी ठीक नहीं है। लेकिन अगर डेटा आपका वेल स्ट्रक्चर्ड है, सिस्टमैटिकली है, तो मेरे को पहले पता चल गया कि हाँ भैया पहले 10th का सर्टिफिकेट आया। अब जैसे मान लो कोई पीएचडी का पहले सर्टिफिकेट दे दिया, फिर 10th का घुमा दिया, लगा दिया, फिर 12th का, तो उसने पूरा कंफ्यूज कर दिया और समझने में भी टाइम लगता है। लेकिन उसी को अगर सिस्टमैटिकली आप कहीं भी अरेंज करोगे कि 10th में भैया हमको इतना आया था, 12th इतना है, ग्रेजुएशन इतना है, पीएचडी में इतना है, पीडीएफ में इतना है, तो वो क्या हुआ, एक वेल स्ट्रक्चर्ड है। तो कोई भी उसको जब पलटेगा, देखेगा, तो वो चीजों को आसानी से रीड करते हुए चला जाएगा और कंफ्यूज नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कभी भी अपने डेटा को, या जो यूजर है, चाहे एंड यूजर है या सिस्टम को, कंफ्यूज नहीं करना। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है बिकॉज कि उससे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा। तो एट लास्ट हमें क्या करना है, अपने डेटा को वेल स्ट्रक्चर्ड करना है। तो जब भी हम लोग डेटा मॉडल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग टू अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, जो डेटा को स्पेशल और उसके नॉन स्पेशल डेटा दोनों के प्रॉपर्टीज को इंटैक्ट करेगा विद इन द जीआईएस डोमेन। तो एक कंपोजिट मॉडल है जो है रास्टर डेटा मॉडल, और एक जो जियो रिलेशनल मॉडल है वो है वेक्टर डेटा मॉडल। तो अब इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि रास्टर डेटा मॉडल क्या होता है, जो एक कंपोजिट मॉडल बोलते हैं, और एक वेक्टर डेटा मॉडल जो एक जियो रिलेशनल मॉडल होता है, वो क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि जीआईएस का सबसे बड़ा एडवांटेज है मल्टी थीमेटिक ओवरले एनालिसिस। जो मैंने पहले ही बताया कि मान लो अभी आपको ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन का मैप बनाना है, मान लो कि कहाँ पर रिचार्ज साइट बना है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के अंतर्गत they have given various they have identified the blocks, which are the blocks which are at a higher risk. And if you see that the majority blocks and the villages which are at a higher risk, I can say 40% of the blocks and the villages belongs to Rajasthan. So how it is possible that you have identified that this block has got a problem and they are coming up with a solution. So all this analysis, all this identification of blocks which are at a deficit location and which are having at a surplus location can only be identified when you are doing a multi-thematic analysis, like
previous whatever atlas that is most popular used for any kind of water conservation methods in India is Rajiv Gandhi drinking atlas, where the remote sensing and GIS data was first used for any water conservation activity at India level, where multi-thematic analysis pertaining to creation from the basics of land use, land cover data, structure data, geological data, geomorphological data, then yield, and then finally they have taken all this criteria and they have developed a methodology, and finally they concluded ki which block, which panchayat has got what kind of water storage and what is the water quality. So that was possible only because of the help of GIS. So whenever you are talking about GIS, we are talking about, because when you are talking about GIS software, especially whether you are using QGIS or ArcGIS or any of the system, you have to use composite data sets will be used. Both the data sets will be used. It can handle both the data sets, whether you talk about the raster data model or whether you talk about vector data model. So when we talk about the spatial data types, we are talking about these are the few techniques that are used. That is regular tessellation, irregular tessellation, point data, line data, and area data. That you already know that what is area data that corresponds to the polygon. So I'll start because I've given a brief, and later on I will be discussing all this in detail. So first I'll start because we have seen that when we talk about the spatial data model, we are talking about two vector model. One is vector, another one is raster. So I'll start up with first because you are daily doing an exercise on a GIS domain. So I start with the vector data concept. So vector data concept, because whenever you are making any data in GIS, you are making three types of layers generally you are creating. Either you are creating a point data, or you are creating a line, or you are creating a polygon features. So whenever you are creating these features, they will be classified under the vector data structure. So you can see then when you are plotting X and Y, you can see when you plot a point data, what does it donates. So a point is represented in the form of a node, and that has got a zero dimension, means no area is involved. So whenever you're putting a point that corresponds to single x and y coordinate pair, means whenever you will see any map, generally more popular, very easy to understand is whenever you will see a tourist map of India or wherever you are going, a atlas map, there are a point features denoted and they are represented with a name. This is Patna, this is Muzaffarpur, this is Bhagalpur, this is a big a different representation will be for a national capital, different representation will be for a state capital. So all those have got a exact x and y pair, but they have got zero area because that is a point that doesn't corresponds to any coverage. That's why the area you cannot do any kind of area estimation for a point feature. Always keep in mind because it has got a zero dimension, and generally they are used to label a feature, to identify a feature, like to represent an area. Like if you want to create a base map, so you'll be putting some major highlights of that area so that anybody unknown from any part of the globe can easily identify for which area you're going to study or what are the important locations. So generally we are using this point data for creation of tree, identification of tree boundaries or oil well locations or label locations of any feature, either that is a state or district boundary or any administrative boundary. So this is a point feature. Then you have got a line. Line is represented in the form of arc. So whenever you have got a arc, you will have one dimension. So one dimension means you have got two or more connected x and y coordinates. So here you can see when I corresponds to two locations. So here you can see there is written 1 and 2 and 7 and 8. They are the specific location of that feature. So how the system will record this data? So it will record the data in the form of 7 and 2, that is the first position, and then it will record in the form of 8 and 1. So you have got two connected or more connected arcs together to form a line, and this line feature generally we are using for creation of any linear features, like the most common linear features are roads, streams, canals. So whatever you see any feature on the globe that is in the form of a
linear pattern, you will be creating a line feature. And finally, when you're creating a polygon that comprises of two dimension, so what does two dimension means? Two dimension means you have got four or more ordered and connected x and y. So how is it possible? You can see that how you're going to pairing, just like you have done for a point that corresponds to 7 and 2. Then line we have already seen. Then this for polygon, you will be doing 7 and 2, that is the first location point. Then again we'll be doing 8 and 1 for the first location point, second location point. Then we are going to do 7 and 1 for the third, and finally to again end that point from the starting point will be, because you have to close the polygon, so again from where we started will be ending up, so we'll be providing the same location to that node. So the first and the last x and y pairs are the same, and that when you're closing it, it comprises an area. So whatever you're mapping it through the form of polygon, either you're making what any features like urban area, forest area, water body that is a bigger in nature here found. So from this, you can understand what are the different kinds of dimension and where can we go. For linear line, you can calculate the length. You cannot calculate the area because that is a length, linear feature. And whenever you're calculating a polygon, you can calculate a area because that incorporates an area. So whenever we are talking about vector data model, you will see a satellite images. So yeah, two way you can classify a satellite image. Either you digitally classified and then you convert raster into vector and then you calculate the area. But for linear features, it is not so accurate. For the area feature, it may be accurate. So that's why in order to have accuracy for the linear features too, we are creating the vectors over the raster. So we'll be using this point x and y features plus labels to identify the point feature. We'll be using the linear series of points to create a line feature. And finally, we'll be creating the line forming the boundaries to create a polygon feature. So these are the different kinds of vector data models that we'll be using in GIS. So whenever we are talking about vector data model, we are trying to locate the different kinds of features that are being recorded by the raster data, and thereafter we'll be recording it, we'll be mapping it through our x and y longitude, where x denotes to your longitude and where y denotes to your latitude. So whenever we are creating a database, whenever we are storing the database, how does it is stored in a system? So here we are not going into the, because we are only concentrated right now towards the creation and providing a name to that feature. That is the thing that we are concentrating. But what is the background, how the data files are structured and stored, that is the basic reason to understand and teach this vector data structure and vector data model. So you can see if there is a identity corresponds to a point, so that's why you will have one x and y. So that denotes where it is located. Here if you see that there has been a labels given to it, so if you go for the longitude direction, there will be that point a denotes is 5, and the from y axis latitude denotes 1, so it will be stored in the form of 5 and 1. In the same way, if you wants to go for b corresponds to the linear feature, so how it will be stored, it will be 0 and 7 for the starting point, then you have got 1 and 7 for the next point, 1 and 6. So starting from the point and gradually it is locating each and every location where you are putting it in the same way, and then finally you will be labeling it as a linear feature with whatever x and y name is. And finally for a polygon feature, again you will be employing the same methodology. So this is the way that the real entities are stored in your system whenever you are creating a shapefile. So whenever you are creating a line segment, it will have two endpoints. Whenever you have got a line string, it will have a sequence of line segments. And whenever you're creating a line ring, it will have sequence of closures. So we'll see it how it happens. So how to organize vectors in computer. So now we know how the points are created, how the lines are stored, how the polygons are stored.
Now, how this data are organized in the form of vector when you are storing it in your computer. So these are the popular models that we are using in vector data analysis. But the most popular technique that we always insisted and we have taught you is topological structure. That is the most popular, but still there are other structures too available where you can store the data. That is spaghetti structure. That is one form of storing the structure. Other one is whole polygon structure. Third one is point and polygon structure, and the finally topological structure. So now we'll be studying in detail about the various kinds of data structure that can be used to organize the vector in your system. So whenever we are talking about spaghetti model, we are talking about a collection of coordinate strings with no inherent structure. So you can see there is x and y, and there are few features that are being denoted by different terms like a and b, and you can see that they don't correspond to any linkage. So whenever we are talking about spaghetti structure, you can see how the data will be recorded. So this is the original map at the top, you can see, and finally these maps are expressed in the forms of Cartesian coordinates where x and y, because each line is connected through a point. Each polygon is connected to a point, and point has got an entity that we have already seen. So how this data structures are known? So for example, if you created a point in a spaghetti data structure, it will be provided with an id. The id number is 7, and finally you will have a location point that will be a single point, that we have already seen that the point will always have a single point. So when again we go for a line here, it corresponds to 31, and again it will be recorded in the form of strings. And finally you have got two polygons at the top, you can see 33 and 39, that corresponds to the different locations, and that will be stored in the form of closed loops. So what does spaghetti structures define from manual digitizing? So crossing lines, there will be no crossing nodes. The common boundary between the adjacent polygon is recorded twice. So maybe many times the data redundancy problem is there. That's why this model is not popular in GIS. The no neighborhood information, कि हमारा पड़ोस में कौन है उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कल को कोई भी हम एनालिसिस करते हैं, जैसे मान लो नेटवर्क एनालिसिस में अभी जो आप कर रहे थे कि टू नोड, फॉर नोड, फ्रॉम नोड, वो कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन मिलता है हमें। और एट लास्ट अनलिंक्ड डेटा रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज। तो एट लास्ट हमारे पास सिस्टम में तो स्टोरेज प्रीफिक्स है, हम उसी मॉडल को सबसे ज्यादा, अगर आप देखोगे कि इतने सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, इमेजेस अवेलेबल है, लेकिन जब भी सैटेलाइट इमेजेस आता है, अगर आपने देखा होगा तो वो आपको जेपीईजी में नहीं आता है, वो आपको पीएनजी में नहीं आता है, वो आपको टिफ में आता है। एनीबडी हु कैन से कि व्हाई द डेटा इज provided by any user only in the form of TIFF, not in the form of PNG, JPG, जो कि सबसे कॉमन डेटा फॉर्मेट्स हैं अगर रास्टर के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें। कोई बता सकता है क्या अभी? अगर नहीं बताएगा तो आगे है हमारे पास, मैं बताऊंगा। टिक में सर, इसके सर टिक का स्टोरेज ज्यादा रहता है सर, जैसे अलग अलग फॉर्मेट का स्टोरेज होता है सर, उसी तरह से टिक में ज्यादा स्टोर हो पाता है, इसीलिए सर टिक फॉर्मेट में। ठीक है, स्टोरेज एक है, लेकिन नॉट मतलब मैं टोटली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन। सर जो सैटेलाइट इमेजरी वगैरह होती है, रास्टर डेटा होते हैं, उसमें मेटा डेटा वगैरह भी होता है, जियो रेफरेंस मतलब पॉइंट्स भी होते हैं, तो वो टिफ नहीं, और तो सब में आईएमजी रहता है, वाले फॉर्मेट वो कर देते हैं। सॉरी सर। वो तो सब में रहता है। आपको आपको पीएनजी में भी मिल जाएगा, आपको जेपीजी में भी मिल जाएगा। सर लेकिन इतना ज्यादा नहीं रह पाता, इसलिए शायद करते हो। और कोई बात नहीं, अभी आगे और बताएंगे। और कोई बताओ जीएस एक्सपोर्ट्स, डॉक्टर विक्रम। कोई नहीं बताएगा? चलो कोई नहीं, मैं बताऊंगा फिर।
तो मैं सोचा कि पहले बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा उसमें। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है? कोई बताओ यार। नहीं तो ये तो मैं नो सर, नो सर। क्या बोलते नहीं हैं, सर, बढ़िया चल रहा है। दीवारों से बात करना हो गया ये तो। नो सर, नो सर, नो सर। कि जैसे कैसे हुआ कि जंगल में आग लगी है और शेक्सपियर गाना बजा रहा है, वैसा हो गया। नो सर। सो दूसरा जो स्ट्रक्चर है, अगर आप स्पेगेटी में देख लिया कि आप डेटा रिडंडेंसी है, लिंकेजेस नहीं है, क्योंकि फाइनली हमें अगर टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड एंटिटी का हमें स्पेशल रिलेशनशिप निकालना है, जो कि आगे अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे स्पेशल रिलेशनशिप निकालना है। तो वहां जाके ये मॉडल फेल हो जाएगा। तो जब भी सोचो कि कोई मॉडल अगर सबसे ज्यादा यूज होता है तो उसके पीछे उसका साइंटिफिक नॉलेज ये रहता है कि जरूर उसमें बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होगा उस डेटा स्ट्रक्चर में, इसलिए उसको लोग बाग ने छोड़ दिया। भले अवेलेबल है, कोई एक पर्टिकुलर स्टडी के लिए यूज कर लेंगे, लेकिन इन जनरल अगर कॉमन ऑपरेशंस की बात करोगे तो वो वहां वो यूज में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है जो स्पेगेटी मॉडल के थ्रू ही काम करता है, उसको बोलते हैं अपन होल पॉलीगॉन और बाउंड्री स्ट्रक्चर। So what does whole polygon of boundary structure corresponds to? So the polygon are described by listing coordinates of point in order to walk around the outside boundary of a polygon. So what it means? It means that the coordinates border for the adjacent polygons may not have be same and resulting in sliver and overlap area. तो आप देखते हो कि अगर ट्वाइस ही एक ही इंफॉर्मेशन को रिपीट कर दोगे तो जितना ज्यादा आप अभी पॉलीगॉन्स में काम करोगे, वेक्टर्स में काम करोगे, तो वहां स्लाइवर्स, अंडरशूट, ओवरशूट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, अननेम्ड पॉलीगॉन सबसे ज्यादा होते हैं, अनक्लोज्ड पॉलीगॉन सबसे ज्यादा होते हैं, और आपके वेकेट पॉलीगॉन सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस टाइप के मॉडल्स में अगर आप काम करते हो तो उनका सोल्यूशन ढूंढना, उनके लाइंस देखो, यहाँ ऑल लाइंस आर डबल, तो अब जब डबल लाइन है तो फिर बड़ा मुश्किल है। अब सब में वो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर मान लो डबल लाइंस के मीन्स रोड तो एक ही है, अगर दो रोड बना दिया एक ही रोड पे तो फिर तो वो एरर हो गया ना भाई। अगर मान लो कि एक खेत है, खेत के बगल में मान लो एक वाटर बॉडी है, लेकिन वो वाटर बॉडी दो बार बन गया सिस्टम के गलती के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं वो एरिया तो कॉम्प्राइज कर रहा है। आप फाइनली अगर उस एरिया को, उस एरर को ठीक नहीं करोगे तो तुम्हारा मान लो कि टोटल एरिया 500 स्क्वायर किलोमीटर है, तो वो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो हो सके 600 स्क्वायर किलोमीटर बन जाए। और इन केस की वो एरिया कवरेज नहीं बढ़ा है तो उसी में डीमार्केशन ऑफ रॉन्ग क्लासेस हो जाएगी, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। तो ये सब क्या है? ये सिस्टम जनरेटेड एरर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा होता है सिस्टम में। तो अब मान लो होल पॉलीगॉन में क्या करेंगे अपन, अब मान लो कि ये डेटा है, कोई रिकॉर्ड हुआ है, ई एक ऑब्जेक्ट है, ए एक ऑब्जेक्ट है, बी एक ऑब्जेक्ट है, सी एक ऑब्जेक्ट है, डी एक ऑब्जेक्ट है। तो अब ये डेटा फाइल कैसे रिकॉर्ड करेगा? अब मान लो कि ए को कैसे रिकॉर्ड करेगा, ए को रिकॉर्ड करेगा 3। अब देखो यहाँ 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, फिर क्या रिकॉर्ड करेगा, उसके चारों बाउंड्री को रिकॉर्ड करेगा। तो ए का चालू करो ऊपर से, तो ए का क्या होगा, 3 एंड 4। तो सबसे टॉप यहां से नीचे से एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की तरफ देखो, फिर ए का क्या करेगा, उसकी बाउंड्री डिफाइन कर रहा है, क्योंकि एट लास्ट आपको बाउंड्री डिफाइन करना तभी तो वो कोई कैलकुलेशन करेगा। तो होल पॉलीगॉन में कैसे करता है, किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड डेटा फाइल में, वो हम लोग समझ रहे हैं। तो ए को देखो 3/4, फिर दूसरी बाउंड्री आई 4/4, फिर तीसरी बाउंड्री आई 4/2, फिर चौथी बाउंड्री आई 3/2। तो ये तो तुम्हारा पूरा ए को उसने उसका पूरी बाउंड्री को लोकेट कर लिया। फिर बी को रिकॉर्ड किया, फिर वैसे ही बी का भी चलेगा, फिर बी के भी 4 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फिर वैसे ही सी का आएगा, फिर वैसे ही डी का आएगा। ई का देखो, अब ई के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। ई के कितना हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स, बताओ कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे? बताओ ई को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? ई को देखो 1/5 किया, सबसे ऊपर वाली बाउंड्री आए, फिर 5/5 किया, वो आउटर बाउंड्री गई, फिर 5/4 किया, वो दूसरी बाउंड्री आई, फिर 3/4 किया, तीसरी बाउंड्री आई, फिर 3/0 किया, वो चौथी बाउंड्री आई, फिर 1/0 किया, ये पांचवा, एंड लास्ट में वो 15। तो ये ऐसे जाके वो डेटा स्ट्रक्चर जो होल पॉलीगॉन है, जब पॉलीगॉन बना रहे हो तो ऐसे जाके वो डेटा फाइल को
सेव करता है आपके सिस्टम में, जिसपे आप ध्यान नहीं देते हो, ये आपको पता ही नहीं लगेगा। जो अपन अभी बात कर रहे हैं, जो सिस्टम, ये आप इस पे ध्यान ही नहीं देते हो, आप तो सिर्फ बनाते रहते हो। लेकिन कैसे जाके बना के आपके सिस्टम में स्टोर होती है, जिसके बेस में आप क्वेरी करोगे, क्योंकि सेकंड हाफ आज एक्सरसाइज क्वेरी का है। तो जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि डेटा जाके स्टोर कैसे हुआ, तब तक वैसे जाके आप वहां क्वेरी कर ही नहीं सकते हो, जब तक डेटा फाइल को आपको पता नहीं है। तो सबसे ज्यादा तीसरा स्ट्रक्चर जो है, एक होल पॉलीगॉन पढ़ लिया, स्पैगेटी पढ़ लिया, तीसरा है पॉइंट एंड पॉलीगॉन स्ट्रक्चर। तो पॉइंट एंड पॉलीगॉन स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करता है? ये लिस्टिंग ऑफ आईडी नंबर्स टू पॉइंट देता है, जो इन एंड अराउंड द बाउंड्रिंग पॉइंट होता है। लेकिन ये क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है? ये सॉल्व्स द डुप्लीकेट कोऑर्डिनेट्स डबल बाउंड्रिंग प्रॉब्लम्स। Lines can be handled similar to polygons list of ID and still no topological information. तो जितने भी आज तक हमने अभी तक पढ़ा, स्पेगेटी हो, होल पॉलीगॉन हो गया, ये टोपोलॉजी, ये हो गया आपका पॉइंट एंड पॉलीगॉन स्ट्रक्चर है, इसमें टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिलेगा, तो जो भी अंडरशूट, ओवरशूट, स्लाइव वर्ड्स टाइप के अनक्लोज पॉलीगॉन्स हैं, वो आपको एरर कभी पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या, अगेन सेम फॉर्मेट में, जैसे मान लो कि जैसे हमने अभी होल पॉलीगॉन स्ट्रक्चर का किया, वैसे पॉइंट एंड पॉलीगॉन स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन अगर आप देखोगे, तो वो कैसे एक डेटा को स्टोर कर रहा है, आप देखो कि सेम फॉर्मेट में मोर और लेस है। लेकिन इसको जो सेविंग का स्टाइल है, वो तुम्हारा देखो, स्टोर तो ऐसे ही कर रहा है पॉइंट फीचर के फॉर्म में, लेकिन पॉलीगॉन फीचर में थोड़ा अलग। तो आप देख सकते हो कि कैसे पॉइंट फीचर को वो स्टोर करेगा, कैसे पॉलीगॉन फीचर को वो स्टोर करेगा, एंड फाइनली कैसे बड़े पॉलीगॉन्स को वो स्टोर करेगा। तो हम लोग इसमें दोनों ऑपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले वाले में सिर्फ किए था हमने पॉलीगॉन स्ट्रक्चर, होल पॉलीगॉन था। यहाँ क्या है, पॉइंट एंड पॉलीगॉन बोथ है। पॉइंट का भी फीचर्स आप आइडेंटिफाई कर रहा है, एंड पॉलीगॉन्स के भी फाइल को क्रिएट कर रहा है, दोनों के फाइल क्रिएट कर रहा। वहां वो वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। एंड फाइनली जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा कॉमन है, और सबसे ज्यादा यूनिवर्सली जो यूज होता है, वो है टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो टोपोलॉजिकल इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये सबसे कॉमन है जीएस में। जब भी क्यूसी करता है कोई भी स्पॉन्सरिंग एजेंसी, मैंने कल ही आपको बताया था, so they'll be using this topological function. So what is this topological function? To see the quality of maps, that your map, whatever vectors that you have created, is error free, is crystal and clear. There is no uh, digital errors involved in that data set. So what is topology? Topology is a branch of mathematics that deals with the property of space that remain invariant under the certain transformation. So it maintains three property, three spatial relationship. First is area. So area defines is a polygon that can be defined by set of lines enclosed in it. Second one is contiguity, that identification of polygons which touch each other or which connect, identify contiguous polygons, that is, which are the polygons which are on your left, which are the polygons which are on your line, which is the line on your left, which is the line on your right. And third one is connectivity. So many times when you will be going for your interview in GIS, a person can ask you what are the three properties that is to be retained or that has to be maintained whenever you are creating a topological information or operation in GIS. And the third one is connectivity, because at last what we want interconnected layers, because if they are not interconnected, we cannot go for any kind of mathematical calculation. So that means identification of interconnected arcs, means lines, a starting point, end point of a network analysis. That some basics already it has been stated by my earlier speaker. And these are the rubber sheeting operation that you will be doing many times when you're doing for georeferencing. So what does topology? One means connection and relationship between objects are independent of their coordinates. The topological properties of an object are preserved when the object is stressed, distorted, and bended. Overcomes major weaknesses of spaghetti model, that is overlaying and network analysis. So what will happen? This is the real shape, for example, on the left hand side. But many times, if you are not selecting the appropriate data structure or appropriate data model,
you'll be deforming the shape and size of that area. So you can see on the left hand side, you have got one model, but the right hand side, we have got a output, but that is not the real representation of the map output that you have trying to replicate using the satellite data sets. So that requires all the line to be connected, polygons closed, and loop ends remains removed. Second topological information that has to be retained is spatial relationship, that says connectivity. Connectivity means relationship between arcs in a network. Second one is contiguity, that is adjacency, means relationship between a polygon. For example, with the left span to one and right, that will be doing on the left hand side, where this line corresponds to what are the feature on the line on the left hand side, what are the feature on the line on the right hand side. And the same thing happens with a polygon, that which is a polygon under whom, like beneath within A, how many number of polygons of B corresponds to how many number of polygons C corresponds to. So that is the topological functions that we do. And finally, each line is bounded by 2 points. For every line, there are two adjacent areas. You can see left polygon and you see right polygon. So whenever we are digitizing GIS, there are two way to do it. Never create a feature. Many times I don't know how do you start writing it, because many times when you are doing a practical in your class, you're creating different boundaries for different layers. Like I've seen many of the students, they are making forest boundary different, they are making build up area different, they are making a wasteland area different. But finally the end user wants a composite map of all the individual layers that you have created. So that is the wrong way of creating any vector in a GIS environment. You must create one geodatabase, and within that geodatabase, you must create all the features within the same polygon. So how to do it? Many times what the users by default or mistakenly, they go on creating the polygons. So creating a polygons means always the boundaries of the lines adjacent to the other polygons won't be matching it. So what is the solution? So there are two operation you can do. Either you use make a bigger polygon. I when I was a student, and still if I want to create a database, I use two commands in GIS. One is I'll be using, yeah, creation polygon is the first polygon that I'll be creating on my map. So what I do, I see, visualize my entire area, and then I start from where I will be starting digitization. So what I do, I make a bigger polygon, and underneath I start using cut polygon. That is one way of getting your error reduced to as much as you can. And the other option is creating a auto complete, means you create a polygon, and thereafter you don't select the option of create polygon, you create an option of auto complete. So when you're doing it, the boundaries adjacent to the polygons will match. Otherwise, when you're always creating a polygon, the boundaries within the adjacent to the polygons won't be close, won't be matched, and then you will have a lot of topological error. And when you will create a topological relationships using the topological command in ArcGIS environment, the entire area will be red. Means the red corresponds to what is the error, because when you are creating a topology, there is a command that you have to provide, because system cannot identify what kind of problem you are looking in. So you have to provide the command whether what kind of error you are looking in, and once you will be providing it, whatever the minute details that you cannot see, because many times if you are creating a geo database for maybe entire district, like I say for Bihar, so that is a very big area of Rajasthan. You cannot identify and go and see each and every polygon. So you need some software, you need some tool, so that this digitizing errors that are inbuilt when you create can be automatically highlighted, and then you can individually go to each and every error, and then you can create it, you can rectify it. When I was a student, I created near about I can say 50,000 polygons for Wasteland Atlas of India using the multi-temporal data sets.
So when I'm created 50,000 polygons in a single layer vector, so that is a huge database I am that creating into a single layer file. But many times there will be lot of error involved in it when I'm digitizing it. Maybe it can differ according to my mood. I've done something wrongly digitization, but that point of time I was in a hurry to complete my operation. But at last, when you're going to the sponsoring agency, you have to check whether you are in a hurry or whatever the date is. You have to give the 100% the data should be correct. So all this topological consistency or all this operation that you're seeing in the form of spatial data, in the form of named spatial data, should be 100% correct. So whenever you are going for spatial data, how the nodes are connected. So you will see that how the nodes are there, what is on the string on the left, what is string on the side. Again, when you are creating a line, like, so you can see how this numbers are stored. So again, when you're seeing an arc, there will be from node to node, means starting node, end node. Then which are the polygons on the left, which are on the polygons on the right. So you can see for the arc table 1, if you see 1, so here it says starts from 4, ends to 1. So from 4 and 1. So what is the polygon on the left? There is no polygon on the left. What is the polygon on the right? That is A34. Again, when you go for the arc 2, what is the starting node? That is 1. What is the end node? That is 2. Again, it will ask what is the polygon on the left? What is the polygon on the right? If you show on the left, there is no polygon. If you show on the right, there is A34. Again, it will go for the arc 3. How it is recorded? It will start from 2 and to 3. So from node to node, what is the polygon on the left? That is 35. What is the polygon on the right? That is 34. Again, you will go for the arc length 4. So what is, we are starting from 3, ending into 4. That is the fourth arc table that you have created it. And what is the polygon on the left? Nil. What is the polygon on the right? Arc 34. And how the polygon will be stored in the spatial data dimension. So you will have got a polygon ID and you have got a arc length. So whenever I am saying a polygon means we are trying to store this arc. So we have got A34. That is a maybe a house number, maybe Smith Estate, means there is a person called Smith and he's got a real estate house. So how it will be when you're creating a database, how it will be created? So it will be created in the form of arc list, that is 1, 2, 3, and 4. And if you're going for 835, it will be 3, 6, 8, and 11. The same thing if you are storing it in the form, these are all the spatial data entities that has been stored in your system. And what is the non-spatial data entities? Means whenever you are providing a node, whenever you are providing an attribute to those corresponding feature, it will be added. So what we do, we go into the attribute and then we create multiple attributes and that functions. So for the line functions, we have stated the different attributes like what is the length of the road, what is the condition of the road, what is the lane number, what is the name of those road. So all those data sets will be stored in the form of non-spatial data. Again, in the form of polygon, you have created 834, 835. For example, you have created a polygon. Now, how would I know कि what is this polygon corresponds to? क्या है ये? Land है, air है, water है, build up है, wasteland है, barren rock है, glacier है. मेरे को क्या पता? Then you have to do, you have to give the attribute to the name. Then you have to give it, that can be any attribute, that can be owner name, that can be address. That depends on the objective of your research. So whenever you are building a topology, so you can see that where does the node number 1 is there and where is arc 4 distance in the direction of the arrow. So from where to where it has to go. So arc 1 corresponds to from arc to arc. So whenever you are building a topology, this is the operation that it will be checking it from where you have started, where to end. If it has not ended, it will ask you to end that line. So you go see there whether that line should be joined there or whether that is a sliver or that is a unclosed line just on the map. You can delete those lines. So all these operation when you are building a topology can be easily identified. So now next, can you fill this topological arc models? Anybody? Hello?
अब तो मैं ये इसको जब तक सॉल्व नहीं करवाऊंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। या तो मैं किसी को, समझ में नहीं आ रहा मेरी चीजें। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आपका, प्लीज। हाँ, तो इसलिए मैं शेयर नहीं किया भाई साहब। अभी मैं कर रहा हूँ कि जब तक अब आप आगे तुम लोग बताओगे नहीं ना, ये क्या सर बोल, देखने तो दीजिए। दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या दिख रहा है भाई, इसके बिना तो मैं आगे जाऊंगा नहीं। मेरा कहाँ गया है स्क्रीन, है ना। अब जैसे अभी हमने किया था, आप बताओ वन को कैसे लिखोगे, फ्रॉम टू, कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, इसका आंसर पीछे है। सारी क्लास को अभी मिला है, देखते हैं कौन मेरे से महालैक्टो चॉकलेट जीतने वाला है, या इक्लियर्स। आप लिखो, इसका आंसर लिखो सारे, कि फ्रॉम आर कौन सा है, टू और डायरेक्शन भी दिया हुआ है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर का डायरेक्शन दिया हुआ है, वो बता रहा है कि कौन लाइन कहाँ जा रहा है, कौन उसके लेफ्ट में है कौन उसके राइट में है। ऐसे ही आइडेंटिफाई करता है जब भी आप जीआईएस में कोई भी डेटाबेस बनाते हो, जब आप क्वेरी करोगे तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो स्टोर कैसे कर रहा है सिस्टम में, तब तक क्वेरी फंक्शन कैसे करेगा, कैसे वो अपने को समझेगा। बताओ। सर वन का, सर वन का बी है और सी। नहीं नहीं, फ्रॉम पूरा डी। बनाओ, ये पूरा बना के मेरे को शेयर करो। सर ये फिर सर ओके सर, एक्सेल में बना देंगे। नहीं नहीं, हाथ में कॉपी, कॉपी पेन नहीं अच्छा, रखते हो क्या बगल में? ओके ओके। कितना टाइम है यार, मतलब मैं, मेरे पास टाइम की कमी नहीं है, हम लोग 1 बजे तक साथ में बैठे हुए हैं। तो हम 2 मिनट 3 मिनट तुम लोग को दे रहे हैं, बनाओ। दिख रहा है ना, आंसर भी है पीछे। हाँ जी सर, हाँ जी सर, दिखा। अगर तुम बोलोगे तो डायरेक्ट आंसर दिखा देता हूँ। नो नो सर, करते हैं। मुजाहिद, है क्या? अच्छा, मैं देखता हूँ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, तब मैं पूछूंगा उनसे। मैं जिससे पूछूंगा वही सर मेरे को जवाब स्क्रीन, देगा। नहीं नहीं। स्क्रीन चली गई सर, ओके, स्क्रीन चली पीपीटी गई। वाली। तो फिर मैं जगत जासूस बनने की कोशिश कर रहा था। मेरे को पता है तुम दोनों बना दोगे। मेरे को और चाहिए लोग बाग जो नहीं मेरे को बना पाएंगे, मेरे को उनको ढूंढना है। समझ में आ रहा है कि नहीं गुरु? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। तो ऐसे ही वो टोपोलॉजिकल डेटा मॉडल में ऐसे ही वो एरर ढूंढता है जब कमांड देते हो ना। ऐसे तो नहीं है कि सिस्टम, तुम कमांड दिया सिस्टम अपने बता देगा, कैसे बताएगा भाई? तो उसके पीछे लॉजिक जब तक तुमको पता नहीं है तब तक क्या कमांड करके कर लोगे। सिर्फ बहुत आदमी सोचता है ना कि सिर्फ गोला बनाना इज नॉट जीएस। गोला इन द सेंस पॉलीगॉन बनाना या लाइन बनाना, तुमने बना दिया और हम लोग मान लेंगे, ऐसा थोड़ा ना है। जब तक सारे वेक्टर डेटा को चेक नहीं करेंगे तुम्हारा इंटरप्रिटेशन, अभी तो सिर्फ एरर की बात कर रहे हैं। इसके बाद जब खत्म होगी आज के क्लास के बाद, कल से तुम्हारा इंटरप्रिटेशन चालू होगा। कि अभी तक तो सैटेलाइट इमेज तो तुमने देखा ही नहीं, अभी तक तो जितने आपने ये इंटरप्रिटेशन या जो कर रहे हो वो तो प्री कुक देता है। आज के डेट में आपको सैटेलाइट इमेज दे दें तो बहुत का, अगर मान लो कि मैं 4 डिफरेंट टेरेन का दे दूं, डेजर्ट का दे दूं, कोस्टल का दे दूं, हिमाचल का दे दूं,
बहुत टफ है। ज्योग्राफिकल एरिया, डायमेंशन, सिग्नेचर्स इंडिया में चीजें इतनी आसान नहीं है कि लाल हरा पीला दिख गया और आज सबको आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट बोल दोगे। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। चले, कोई किसी का आंसर हो गया? सर एक 2 मिनट सर और वन दो। मिनट 1 मिनट। बाकी कोई नहीं बना रहा है क्योंकि 2 ही आदमी का आवाज आ रहा है, इसलिए ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ 2 ही आदमी के लिए है। बाकी तो क्या बोलते हैं, कवि सम्मेलन में आए हैं मुशायरा सुनने, कोई बात नहीं, सुनिए सर मुशायरा। 1 ही मिनट सेंड कर रहे हैं आपको। सबको ही अपना आंसर फोटो खींच के चैट में डालो, तो इससे पता चल जाएगा कि कौन कवि सम्मेलन में नहीं आए। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ये टोपोलॉजी है, वो ले हो गया, अभी और भी फंक्शंस है, वो भी मेरे को जल्दी बताना है क्योंकि बहुत लंबा है ये लेक्चर, बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है अभी। अब जल्दी करो, फिर मेरे पास टाइम नहीं तो फिर मेरे को जल्दी भागना पड़ेगा उधर। कोई कोई एक बता दो मुझे, कोई भी एक। सर 1 का बताता हूँ। सर 1 का वन का D2C बताओ। अमित प्लीज गो अहेड। सर 1 का है D2C और लेफ्ट में आएगा C, राइट में आएगा A। सेकंड का है सर 2 D2B, मतलब आर्क 2 का, और लेफ्ट में आएगा B, राइट में आएगा A। थर्ड का है D2A। नहीं, फिर से बताओ, तुम्हारा सेकंड ना गलत है। सेकंड का, सॉरी सर, तुम्हें बताता हूँ सर। सेकंड का है D2B। हाँ ठीक है, वो ठीक है। लेफ्ट में आएगा A, राइट में आएगा B। हाँ सही है। वो सर मैंने उल्टा कर दिया था हाँ थोड़ी जल्दी हाँ में। हाँ, और इसलिए सर देखो थर्ड का, देखो आप ठीक है, मैं समझ गया, तुम समझ गए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है ना, देखो वो तुम तुरंत रेक्टिफाई, मतलब तुम समझ गए पर्पस ये है। एट एंड ऑफ द डे ऑपरेशन समझे ना कि चलता क्या है, कैसे करता है। यस सर यस सर। पर्पस मेरा सॉल्व हो गया। पर्पस लेक्चर का ये है कि लोगों को पता चल जाए कि चलता कैसे और होता कैसे है, ठीक है ना। अब कौन कौन बताएगा नेक्स्ट? थर्ड का कौन सर बताएगा? मैं बताता हूँ, हाँ अंशुल दिस साइड। हाँ, अंशुल। अंशुल तुम बताओ, थर्ड का बताओ, एक ही बताओगे। सर थर्ड का D2A, हम्म फ्रॉम D टू हम्म A। हम्म सर लेफ्ट में B, हाँ राइट में C। ठीक है, डन डन, ओवर ओवर, डन, गुड गुड गुड। थैंक यू सर। नेक्स्ट, फोर्थ कौन बताएगा? Sir, can I try? हाँ हाँ एकदम, इसलिए तो दिया है। Sir, fourth ka हम्म from A to हम्म C. On हम्म। left it is nil. On right it is C. नील कहाँ गया? Sir, fourth. Arc fourth. ओके फोर्थ, ठीक है, डन डन, ठीक है, क्योंकि जीरो है वहां, जीरो मतलब कोई भी नहीं है, ठीक है, नील करोस्पॉन्ड्स टू जीरो। चलो नेक्स्ट। सर फिफ्थ मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ बताओ बताओ। C, B, A और नल। सी बी, A और नल। नहीं नल और ए है। भैया अच्छा हाँ। डायरेक्शन उल्टी कर दिया आपने। ठीक है ठीक है ठीक है। समझे ना, देखो यही 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 चेप चेप यही होता है ना, चेप यही सर है। गलत ही होगा ना, ट्राई तो कर रहे हैं। हाँ, देखो यही तो मैं बोला ना, एट लास्ट सीखता वही है जो गलत करता है। लाइफ में अगर आपने गलती नहीं की है ना, जिंदगी में सीखोगे नहीं, ठीक है ना। और फाइनली लास्ट अंकुश बताएगी, कौन बताएगा, बताओ कोई। मैं बता रही हूँ सर। नहीं, कौन बता रहा है? मैं बता रही हूँ सर। एक नाम देखो, मेरे पास स्क्रीन नहीं दिख रहा है इसलिए मेरे को नाम नहीं पता, कोई भी बता दो। सर ज्ञानेश्वर। हाँ हाँ इसका बोलिए होगा बोलिए। from A to B, ए B and null। यस, बढ़िया है। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि क्या टोपोलॉजिकल फंक्शन करेंगे तो वो कैसे, जब कमांड दोगे तो कैसे चेक करेगा अपने डेटाबेस को। जब टोपोलॉजिकल मॉडल करोगे ना तो ये कमांड दोगे, अभी कमांड सीखेंगे आगे, बहुत है अभी इसमें करना।
तो ऐसे ही वो उसको जाके ना पूरा वो कमांड चेक करता है, स्पेशल रिलेशनशिप चेंज करेगा, चेक करेगा, जैसे पॉइंट इन पॉइंट रिलेशन हो गया, पॉइंट इन लाइन रिलेशनशिप है, फिर पॉइंट इन एरिया रिलेशनशिप है, लाइन इन लाइन रिलेशनशिप है, लाइन एरिया रिलेशनशिप, एरिया एरिया रिलेशनशिप है। तो इतनी सारी फीचर्स का वो एक दूसरे से स्पेशल कनेक्शन, टोपोलॉजिकल कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ स्पेशल फंक्शन, वो सारा ऑपरेशन क्रिएट करेगा, चेक करेगा, हमें बताएगा कि कहाँ कौन सी गलती हो रही है। तो अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन द स्पेगेटी मॉडल एंड द टोपोलॉजिकल मॉडल, और स्पेगेटी मॉडल वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी सिंपल। ये टोपोलॉजिकल मॉडल देखो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन नो स्पेशल रिलेशनशिप रिटेन। तो स्पेगेटी में क्या है, जो स्पेशल डेटा है, जो तुम्हारा एक्स एंड वाई, वो रिटेन नहीं करता है। तो जब हम तो अगर जीआईएस में काम करते हैं तो हमें तो एक्स एंड वाई चाहिए ना, स्पेशल डेटा। बिना स्पेशल डेटा का क्या करेगा नॉन स्पेशल डेटा का? फिर तो वो एक्सेल में डेटाबेस क्रिएशन सिर्फ डीबीएमएस फाइल हो गया बिना स्पेशल लोकेशन का। लेकिन जब आप टोपोलॉजिकल मॉडल बनाते हो तो उसमें स्पेशल रिलेशनशिप मेंटेन रहती है, प्लस डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम रहता है विदाउट उसको अफेक्ट किया हुआ। लाइंस बिटवीन द एडजेसेंट एरिया मस्ट बी डिस्टाइज एंड स्टोर्ड ट्वाइस। तो दो दो बार, तीन तीन बार एक ही ऑपरेशन को करना पड़ता है, लेकिन इसमें टोपोलॉजिकल में एक ही बार में सारा काम हो जाता है आपका। तो ये सारे सबसे कॉमन फाइल फॉर्मेट्स हैं जिसमें कि आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं, चाहे वो डाइम है, चाहे टाइगर है, डीएलजी है, शेप फाइल, इसरी सबसे ज्यादा कॉमन है, इसरी शेप फाइल। ऐसे आप ऑटो कैड का क्या आता है, ड्राइंग फाइल आता है, डीडब्ल्यूजी आता है, ठीक है ना। तो ये दो सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो आपको मिलेंगे। लेकिन जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि सेव फाइल, अब क्या है कि जितना बड़ा कंपनी है तो आज के डेट में कोई भी कंपनी, जैसे एडास का अपना एक्सटेंशन है, आप पीसीआई जाओगे तो उसका अपना एक्सटेंशन है, आप ईएनवी सॉफ्टवेयर जाओगे तो उसका अपना एक्सटेंशन है, आप इसरी आर्क मैप जाओगे उसका अपना एक्सटेंशन है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हर सैटेलाइट इमेज, मतलब हर सॉफ्टवेयर का अपना एक्सटेंशन है बाय डिफॉल्ट, जो इमेज को स्टोर करता है, चाहे वो वेक्टर फॉर्मेट में हो, चाहे वो रास्टर फॉर्मेट में है। लेकिन हर सॉफ्टवेयर कॉम्पेटेबल है, क्योंकि मार्केट में पता है कि इतने सारा कंपटीशन है कि अगर आप वो कॉम्पेटेबिलिटी अपने सॉफ्टवेयर में नहीं दोगे तो यूजर फिर उसको यूज करना छोड़ देगा। जैसे आज आज के जमाने में आर्कजीएस में शेप फाइल इतना पॉपुलर है, तो जो भी इमेज प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो शेप फाइल अगर एक्सटेंशन नहीं देंगे तो समझो कि कोई दुनिया में उसके सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करेगा, चाहे कितना भी बड़ा वो उसमें मॉडल्स क्यों ना हो। वैसे ही है कि आप बहुत सारे देखना सॉफ्टवेयर में, जैसे अब आप पीसीआई जियोमेटिका में चले जाओ, उसका अपना ही फाइल फॉर्मेट है, वो खोलता नहीं है। पहले माइक्रोसॉफ्ट टॉप था, वो अपना ही उसका फाइल फॉर्मेट है। तो बहुत बार डेटा ट्रांसफर ये, लेकिन एक चीज है कि जो आईएमजी है, जो टिफ है, और जो शेप फाइल है, ये पॉपुलर है बहुत ज्यादा। तो आपको हमेशा क्या करना होगा, उस फाइल में एक्सपोर्ट करना होगा जिसको वो आइडेंटिफाई करे, और फिर अगर उसको अपने सिस्टम में खोलना है तो दूसरे एक्सटेंशन से अपने एक्सटेंशन में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास हर सॉफ्टवेयर में एक फाइल से दूसरे फाइल में भेजने का ऑप्शन है, और दूसरे फाइल से सेम फाइल में लाने का ऑप्शन है। तो ये सबसे एडवांटेज है। अगर आप देखोगे तो शेप फाइल आप देखते ही हो, जो सबसे ज्यादा हम लोग बनाते हैं, तो उसमें टोपोलॉजिकल फीचर्स, जो एटलीस्ट 3 फीचर्स रहते हैं शेप फाइल, वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताता है। जनरली हम लोग डिजिटाइज करते हैं तो जो डेटाबेस हमारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जाके स्टोर होता है उस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये उस चीज को बता रहा है। फिर एसएचएक्स क्या बताता है, indices to improve the performance। dbmf फाइल क्या बताता है, it contains the attribute data। जितना भी एट्रीब्यूट आप डालते हो, जो आप सॉफ्टवेयर में डाल रहे हो, वो ऑटोमेटिक जाके डीबीएफ फाइल में जनरेट होता है। एंड डॉट एसबीएक्स वो उसको इंडिकेट करता है इंडेक्सिंग का। तो जब भी कोई आप बनाते हो उसमें डिफरेंट फाइल फॉर्मेट है, एंड हर फाइल फॉर्मेट एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है। तो जियो डेटाबेस में हम लोग इसलिए बोल रहे थे कि ये सारा एक ही जगह फाइल रिटेन रहेगा। लेकिन अगर आप सेव फाइल बनाओगे तो बहुत बार क्या होगा, कॉपी करते समय मान लो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो उस सेव फाइल के लिए इंपॉर्टेंट थी, आपने इसमें से 3 तो कॉपी कर लिए, एसएचपी कर लिया, एसएचएक्स कर लिया, एसबीएक्स कर लिया, लेकिन डीबीएफ छोड़ दिया आपने। और जैसे वो सिस्टम में ले जाके खोलोगे डेटा को तो वहां लाल हो जाएगा, वो दिखाएगा एरर, वो खुलेगा ही नहीं सिस्टम में। तो अब क्या, अब मालूम चलता है कि आप प्रेजेंटेशन था आपका हैदराबाद में, डेटा था राजस्थान में,
आज छुट्टी है, बंद है, तो फिर क्या करोगे? वहां जाके फिर आपको डांट पड़ सकती है, आपका प्रेजेंटेशन है तो पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है। तो चाहे डेटा है, किसी को आगे प्रोसेस करना है, आज ही डेटा भेजना है, तो वो फाइल ही नहीं खुलेगी, तो फिर वो काम नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी चीजों को हमेशा हमें ध्यान रखना है, सो दैट एंड फाइनली एक गुड कंप्रेशन टेक्निक चाहिए, जहां की एक लॉजिकल इंफॉर्मेशन हम लोग ऑब्टेन करें। तो एडवांटेज क्या है वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर का? गुड मॉडलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, टोपोलॉजी वेल एक्सप्लेन्ड है। एनालिसिस के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट एंड रबर शीटिंग जो करते हैं, अपने मैप को पेपर में जो ट्रांसफर करते हैं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो अच्छे से होता है विदाउट डिफॉर्मेशन ऑफ द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द बाउंड्री ऑफ दैट एरिया। देन एक्यूरेट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है विद यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल एंड रिट्राइवल, अपडेशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ कोई भी डेटा जो एट्रीब्यूट का हो या स्ट्रक्चर का हो, वो आप आराम से कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? हर चीज का एक एडवांटेज है, हर चीज का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स दैट आर वेरी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स that requires lot of difficult, because whatever task that I've given you was a single polygon, but if I give this task for 50,000 polygon, it is quite tough to identify it manually. Then you will be running the command, you will be doing it many times, there can be a lot of change that is not supposed to be done. So don't rely that always it will be 100% accurate. Whatever topology, you have to individually check all the errors that has been highlighted when you have created a topological function, so that the actual features doesn't change. Many times system get confused, and because of the confusion, because of the complication of the structure, it uses lot of computer power, it's very expensive, highly drawing and coloring is required, high obtained data sets are required. So till now we have done with raster data, vector data structure. Now we'll start off with raster data concept. So raster data, whenever we are talking about raster data structure, raster data concept, we are talking about satellite imaging, we are talking about pictures. So whenever you're saying satellite image, we are talking about, we said satellite image, not a picture. So there is a difference between a picture and an image. Can anybody define me, or at least list me two differences between an image and a picture? Anyone? House is open. Sir, No, no, not sir, you. image. No, not you. You are the only one who always reply. No, I know you are extraordinary. You are performing well. I'm very happy for you. I'm very happy. I'm very happy. I'm not discouraging you, but I also want that the other people also behave like you are behaving, with the positive intent and a prompt answer. There are two way. Either you don't know, then this fellow will say, if you know, then better you speak. Yeah. Anyone? Yeah, you continue then. You continue. If nobody is there, then you've got a chance. Hello, sir. Yeah. मेरी बात आ रही है? Yes, yes. Sir, नहीं image सर, is a pictorial मतलब representation representation that can show various wavelength. Like only photo can only represent invisible spectrum, but an image can represent in near infrared also and microwave also. Okay, okay, So that's the major difference between a okay, photograph and image. okay, okay. Anybody who wants to add to it, what he stated? Add a knowledge will be a boost to us. So whenever, yeah, anybody? So whenever we are talking about an image, we are talking about an area that is covered with a grid with an equal size cell. That equal size cell denotes a pixel. So whenever we are saying a satellite image, each and every satellite image will be seen in this form. Just like when your TV gets stuck many times, it is in the form of pixels, but you see in the form of colors. So those pixels are the smallest unit of an image. This image contains a number. In satellite image, they are denoted with a digital number. Those digital numbers are the recorded energy from a particular real space recorded by a sensor, and that number corresponds to the real Earth object. So that's why always the raster data is in the form of image,
and the attributes are recorded, like how to right now what I said was all the spatial data. Now what to do with the non-spatial data in the raster data. So attributes are recorded by assigning the each cell with a single value. So whatever value we are assigning to the cell, that is the you can say radiometric resolution. In terms of resolution, when I'm talking about, because you've got 4 times of resolution in a satellite image, that has to be retained, that has to be checked, that has to be evaluated. That is the spatial, spectral, radiometric, and temporal. So right now, whatever we are talking about is the radiometric. Not I'll say radiometric because that is more kind of a size of the data set. It is more of a reflectance from a that also denote as emissivity is recorded by that. So that is in the form of numbers. That is the typical 8 bits data, that is 256 possible combination. Means I have already stated that whatever digital number is recorded is the emissivity data or the reflectance that earth object has given to the sensors recorded. So right now the general data bit size data radiometric resolution of the more or less data sets are 8 bit. 8 bit means 2 to the power 8. 2 to the power 8 means 256. A combination means 0 is what? Black, and 256 means 255th is white. So whenever you got a satellite image, when I've got a 8-bit data set, I've got 255 color combination through which I can differentiate or I can highlight my earth object. I can differentiate, I can show. But when I compare this 8-bit data set with a 4-bit data, for example, 4-bit data means 2 to the power 4, that corresponds to 16. Means if you have got 0 to 15 grayscale, and on the other hand, if you have got 0 to 255 grayscale, which image will have a better radiometric and resolution? Anybody? 8-bit data or a 4-bit data will have a better radiometric resolution. Sir, 8-bit data. Yes, obviously 8-bit data, because you have got lot of color combination to play with, and the boundaries, because at last you want to see a clear visible image with a clear visible boundary, and that can be possible only when your data is well represented, when the data is well structured, when the data is radiometrically correct. So right now, what we are saying is data structure. So the common structures are, I'll be not going into much detail because I've got many slides left. So I'll go with a fast. Then you have got a square grid, that is common, rectangular, triangular, hexagonal, triangular, tin. Tin is most common and popularly used for digital elevation model. So whenever you're creating any digital elevation model, prior to creation of that, a tin is created, that is known as triangular irregular network. So we'll be discussing in detail for the raster data model. So raster data structures are efficiently used for increasing the data processing performance, because vector data, you see, it takes lot of time. You have to create a point, line, polygon, then you have to see the projection, then you have to give this, that. Oh, it's lot of confusion all around. But when you are going to the raster data model, it is very good, it is very efficient, it's very fast, its performance is good. It depends on the speed of the laptop or the system, and finally to the storage. So there you have got two kinds of method, that is a compression based method or a scan order method. So that are most common methods. So the common method through which you are recording the data set and that is stored in computer, the most popular data set that is used and stored is known as run length coding. So whenever you're storing the data in your system, how this system data are stored, that is the operation that we are studying right now. So the first raster data model through which all the data sets are recorded are known as run length coding, where it describes the interior of an area by run length instead of the boundary. Instead of the boundary, that is not taking as a boundary but run length. So you can see this common row 9, then row 10, then row 11. So by the name 1 to 10, so if you count 1 to 10, this the entire row corresponds to a particular feature. Then again for the row 11, that corresponds to a particular feature. So if you go, there was a 10 here, there is a smaller pixel, that is a different area. So this all as color
is a single object. This all ash color object is a single object. So how it will be recorded and decoded and stored in the system, that is the way we are reading it in the form of run length coding. Then second one is raster compression. Instead of coding it, you're compressing the data set. So one of the widely used is compression techniques. So code the raster data using the run length coding with row order. So run length code is already we have given, there will be a row and then will be corresponds to how much is the entity. So by default the system will understand ki row 10 from this to this line number, like if we are using the option run length code, row 10 corresponds to 110. So all these 10 features from starting from the 1 till 10th, the system easily understand that all the features are same. So we provide different this data sets to identifying the different auth object, and the original image size is retained, and finally the run length code file size is only 26 bytes, because the importance here we are giving is to the storage. So you can see that a large amount of data, because of the coding that we have given, the data is compressed finally like 255, like just like you're pushing a plastic inwards or you're pushing a foam inwards, that is the way. So this data is compressed and stored. The other operation through which you can store the raster data model is quad tree coding. Quad tree coding, that is the another kind of raster data modeling that we are storing it. That is the successive and the hierarchical division of an area with an array. So here you can see that we are putting the different quadrants. Each quadrants will be classified into a particular number of class, just like a hierarchy scope. So you can see that just like when we started using computer in our classrooms when I was in school, my teacher used to give a number like ABCD. Now when I am typing ABCD, how this system will understand ki whether I have typed A, whether I have typed B, whether I typed C, because computer understand only binary language, means whatever we are typing, it understand only 0 and 1. So there is a code given to that for each and every object. In the same way, in the quad tree coding also, we are performing a hierarchy. We are providing a hierarchy which is at a level 1, which is at a level 2, which is at a level 3. And finally, we are corresponding to those operations ki how it is stored and it will be declassified. Next, again, you can see this is a widely induced quad tree compression. It is used. So quad tree, if you go, it's a geographical area decomposed into 4 quadrants. Decomposition continues until each quadrant represents a homogeneous unit. The storage requirement is much lower than what we have done for the smallest quad element. So you have got different kinds of levels, level 1, level 2, level 3, homogeneous. So if you see, these are the different kinds of data, how the data is recorded. You can see the features are changing, the data is changing, and finally you will be getting a more detailed structure when you are going for a last feature. So these are the kind of raster ordering that you have to do. So if you see that there are the two concept that we are using for the writer data concept, that is loosey and looseless. So if you compare, you can produce exactly original data from a compressed data. So these are the different file formats. So if you go for the raster data structures, the advantage is that they are simple data structures, they are location specific. Attribute data is easy to handle. You can perform different kinds of filtering operation. Many kinds of spatial analysis can be done with a simple and regular space. Obviously, whenever you have a positive of any data, you will have a negative. So the negatives are disadvantages are it is a large data volumes. It is used in large grids, so the spatial resolutions decreases. Then arranging of data is a phenomenon task and complicated structure. It is very difficult to handle because maybe many times the students are not from the mathematical background, like if you see majority students coming in remote sensing, the thrust are from geography. So when it comes to the mathematical
understanding or a statistical understanding, and when you go for the development side, the students face the difficulty because they don't have maybe at plus two mathematics, or in future classes they didn't study mathematics. So many times they feel problem because the digital image processing, whenever you're doing in satellite images, corresponds to all the mathematical transformation that is changed from a particular image to a different image. So until unless you are not having a clear understanding of the entire logical operation, what was the logic and how did it change, there is no issue. If you're a user, you don't have any understanding of mathematics, nothing to worry. You'll get an image, but you will never understand what was the logic, what did had happened, and always your interpretation will be wrong. So if you compare, that was the merits of each and every raster data and vector data. Now we'll be comparing it individually. If you go for the raster data model, when you compare with a vector data model, location is referred by a grid cell in a rectangular array. So whenever we are representing the point, easy to understand, the point that we correspond in a vector data is represented in the form of a pixel. So the pixel is a point, you can very easy to understand. Okay, this is a pixel and this is a point. So whenever there is a pixel means we are representing a point. So and they are like in the vector, those lines are in the form of points and they are also connected in the pixel. So that is also in an array and they are connected and they have got a reference ID. So you can see that each and every data has got a different feature. The biggest advantage is that best use of this raster data models are for elevation map, temperature map, then digital elevation maps, whatever your contour and all you're creating. They are the raster data models, and all the minute lines like discrete political boundary transportation boundaries are vector data model. So you can see that the same raster data now it will be represented on the left hand side. So you can see that this is the you can see you can convert this vector into raster. So when you will convert this vector into raster, this is the way it will be look like. And on the side right hand side, if you see this raster, if you want to create a vector after using this satellite image, you will be creating the raster and it will be looking that. So in the crux, I will say that until unless you are not capable enough of handling both the data sets, whether we are talking about raster data set or vector data set, yeah, you cannot succeed your dream, you cannot succeed your project, because the coordination is required in both the data sets, the expertise is required in both the data sets, whether you are handling a raster data or a vector data. So, if compared to data structure, raster data is more complex, vector data is complex. You can see because here, if you go and you have to copy a satellite image, you will be getting only two files, IMG files and RRD files. Or if you have got a GeoTIFF, that is a single file, just copy and just take it away. So that is more structure. Volumes is raster data always, because we are talking about pixels and all. Always it will be big. Vectors always small. That's why they are more popular than graphical representation. You cannot play with the pixels, because whenever you're creating it, the boundaries will be in the form of pixels. So pixels many time it looks like in nature you cannot see anything in the form of a boundary that is in the form of pixels. It is smooth. So whenever you're creating a vector, that is a smooth boundary. That's why whatever map generally you're seeing anywhere by any government of India who decorates in their houses, rooms, or the atlases, they are not the pixels, they are the vectors that have been created on the basis of this raster data. And finally, the vector data has got a better graphical representation. Overlay analysis, whenever you want to go for overlay analysis in GIS environment, always you have to create a raster data, because vector data cannot be overlaid, because the file format that is allowed and that the software accepts for the overlay analysis, because there we'll be providing the different kinds of weightages, we'll be providing the different kinds of ranks to each and every individual, each and every layer. So there, if you go with the vector, you cannot provide it because it won't be highlighted, you cannot select the data. So all the layers, like if you created a land use land cover map through a vector file, now you want to overlay it into a GIS environment, you're supposed to convert your data first from vector to raster, then only it can be recorded and then only it will be highlighted in that portion. Then network analysis, if you go in raster, because it's a pixel base, it's not under your control,
That's why many times you will not get the accurate map. But when you go for vector data model, because that is a discrete feature and this is a continuous feature. Discrete means different identity, you can abruptly change. But when you comes to a continuous feature means when you are coming from Himalaya from upwards to downwards at 5,000 feet, you won't be getting 200 meters. So that is the meaning of continuous feature. Then geometric accuracy is much more higher in vector data if you compare with the geometric data. And finally, the continuous feature is average, and there that is a poor. So this is the first dimension. If there is any question left, I can ask for 2 to 3 minutes of discussion. Thereafter, I've got a different slide to show it. Any question? Yeah, buddies. Any question? If not, I'll be sharing my other slide. So it seems there is no question. So I'll proceed further. So there are few operations that I'll be showing you, not in much detail. Can you see my slides? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So always I said ki there is a operation that makes GIS a beautiful software, that is a overlay analysis, that is a multi-thematic analysis. So here you can see that there are two different layers that you have created, and one is the geological layer that you have created in GIS environment, and the second one is the ownership. So now you want to see ki does there is any relationship with ownership with the geology that the people of are what constructing on a particular geology that is restricted in nature. So that can be possible only when you are overlaying the ownership boundary with the geological boundary. So you can see the final product at the end in the downwards there is a overlay boundary. So such kind of operations are very popular in GIS, and that gives a added advantage to the administrator planner. Like when I was working with UNICEF in BIT. So the UNICEF wanted to see the gaps area. They wanted to create high schools. So how to create high school? Where to create a high school? So generally, what happened in India in past was whenever there is a more political, stronger person electing from a particular constituency, all the facilities are towards the administrative boundary. जैसे मान लो जिला जो है, जिले में ही सब कुछ है. Like अगर मैं आरा से बिलोंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल बिहार, तो अगर किसी को आरा में पढ़ना है, तो हर चीज आरा के जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर उसकी बाउंड्री उसी में है. फिर कोई और अगर स्कूल खोलना है तो भैया जहां जहां सब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहां वहां उन लोग ने खोल दिया. लेकिन है कि बहुत जगह लोगों को 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता और एक जगह 5-5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पे स्कूल है. तो वो पता कैसे चलेगा कि 2 किलोमीटर पे स्कूल है और कहाँ 100 किलोमीटर पे दूर है, कहाँ किसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है. तो जब यही चीजें हमने ओवरले की, जितने भी स्कूल बाउंड्रीज हैं, जितने भी हाई स्कूल बाउंड्रीज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी बाउंड्रीज हैं, तो हमें पता चला कि एक ही 2 ब्लॉक में सारी फैसिलिटीज जितने भी गवर्नमेंट के हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है एंड बाकी ब्लॉक्स लेफ्ट आउट है. जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, तो मैं रांची से बिलोंग करता हूं, तो अगर आप कंपेयर करोगे रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, ये 4 सबसे फेमस टाउन है. लेकिन इसके अलावा अगर आप चले जाओ तो 18 या 19 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि सीवियरली अफेक्टेड है फ्रॉम नक्सलाइट्स. तो क्यों है? इफ यू गो फॉर द रीजन यू विल सी दैट कि जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटी रिलेटेड है, अब स्कूल होगा, अगर मान लीजिए आप राजस्थान में ही आप देखो कितनी सारी यूनिवर्सिटी, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी में सोचो पूरे इंडिया से इतने लोग आ रहे हैं, फायदा किसको हो रहा है? फायदा तो राजस्थान में को हो रहा है ना भाई, कि वहां से बच्चे आ रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो फीस किसको दे रहे हैं? यहाँ के गवर्नमेंट को दे रहे हैं. तो एट लास्ट प्रॉफिट किसको हुआ? यहाँ के गवर्नमेंट को. तो आप जब तक ये स्पेशली डेटा को नहीं देखेंगे तब तक किसी के रियल जेनेसिस को पता नहीं चलेगा. तो जो वहां के चीफ सेक्रेटरी थे वो बोले नहीं, मैं तो अपने मैं लूंगा ये डिसीजन, मैं इसमें पॉलिटिक्स होने नहीं दूंगा. और उन्होंने पूरा स्पेशल मैप बना के जहां जहां डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जैसे अभी आगे हम लोग बफर एनालिसिस में, ये मैं वो बता रहा था, जैसे मान लो कि अभी गवर्नमेंट को चौड़ा करना है रोड, फॉर एग्जांपल कि 500 मीटर साइड में और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मेरे को एक्वायर करना है लैंड. तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि किसका घर, किसका खेत, किसका दुकान, किसका क्या आ रहा है उस
घर में, क्योंकि गवर्नमेंट तो नोटिस भेजती है ना, तो देखते हो कि जिसका भी टूटने वाला रहता है घर, दुकान या कुछ भी डेवलपमेंट, उसको गवर्नमेंट पहले ही नोटिस दे देती है कि भैया अपना हटाओ, नहीं हटाओगे इतने दिन में तो जो हम लोग तोड़ेंगे उसका भी पैसा ले लेंगे। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चल जाती है कि 500 मीटर के अंदर में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसके लिए एक ऑपरेशन है जीआईएस में, जिसको बोलते हैं बफर एनालिसिस, ऑल्सो नोन एज प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस, जहां की आप बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि कौन आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में है, कौन आपके बाउंड्री के बाहर। तो मान लो कि एक स्कूल है, मान लो मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं बोलता हूं कि मेरे स्कूल के 500 मीटर के अंदर में कोई भी वाइन शॉप नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी टोबैको शॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो यूथ में है गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा? तो क्या है, जियो डेटाबेस में मेरे को पता रहेगा, मेरे पास स्पेशल डोमेंशन में पहले से लोकेटेड बाउंड्रीज है कि कहाँ वाइन शॉप है, कहाँ ये पान भंडार और सारे दुकान है। मैं वो प्रॉक्सिमिटी टूल चलाऊंगा जीआईएस में, और मैं आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन 500 मीटर के अंदर है, कौन 500 मीटर के बाहर है। तो फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोल सकते हैं कि भैया इनको नोटिस दीजिए, इनको रीशिफ्ट कीजिए, क्योंकि यूथ बर्बाद हो रहा है इससे। तो सच काइंड ऑफ स्टडी कैन बी इजिली डन विदाउट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मतलब आप सोचो और आपको वो सोल्यूशन देगा। तो ये टाइप का सोल्यूशन आप कहीं भी गैदर कर सकते हो। डेफिसिट एरिया, आज के जमाने में जितना भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, चाहे ना वाटर कंजर्वेशन है, स्मार्ट सिटी है। अब स्मार्ट सिटी में जब तक टेरेन एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आप अगर देख लो जयपुर को, आप देख लो चंडीगढ़ को, कितना वेल प्लान्ड है, कितना वेल अरेंज्ड है, सारी चीजें हैं। लेकिन वही आप जो पुराने टाउन्स में चले जाओ, जो कि पटना हो गया और उसी टाइप के जितने भी, वो कंजेस्टेड सिटी है। तो आज के जमाने में जब स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट बोल रही है, तो वो एक वेल प्लान सिटी बनानी है। तो वहां अगर आप, मैं जिस टाउनशिप से आता हूँ रांची, वो एचईसी है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, बिल्ड इन 1962। और आज भी वो टाउनशिप अगर आप सैटेलाइट इमेज में देखोगे, इट इज अ वेल स्टैब्लिश्ड। मतलब जिन्होंने भी प्लानर ने सोचो 1962 में इतना वेल प्लान किया होगा, तो वो प्लानिंग इंडिया नहीं था, वो कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया था। तो वो वेल प्लान्ड है, रोड्स वेल प्लान्ड है, सीवेज वेल प्लान्ड है। कहीं भी मेरे घर के आसपास कहीं भी मुझे इलेक्ट्रिफिकेशन का वायर नहीं दिखा, मेरे को सीवेज का कनेक्शन कहां से आता मेरे को नहीं पता। एंड ऑल आर अंदर, मतलब सब जमीन के अंदर है, कोई रोड के बाहर आपको कहीं भी लटका झटका ये नहीं जाओगे। रोड इतनी चौड़ी है कि 2 वे पास है, पूरा रो है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल है, प्लेइंग पार्क्स है, ग्राउंड्स हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, अगर मान लो कि कोई कहीं डेवलपमेंट का आया कि भैया यहाँ यूनिवर्सिटी बनने वाला है, जैसे बॉम्बे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने वाली थी, अब वहां लोग बाग ने जमीन खरीद के अनप्लान्ड डेवलपमेंट किया। तो वही गवर्नमेंट और राजस्थान का, आप किसी और स्टेट से मैं कंपैरिजन करता हूं, तो यहाँ ये चीज जेडीए का बहुत बढ़िया है कि ये पूरा जमीन एक्वायर करते हैं, प्लान करते हैं और फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि दूसरे जगह नहीं होता है। इसलिए वहां क्लमजी है। अगर आप बहुत सारे मेजर सिटी में चल जाओ, कॉलोनीज में चले जाओ, तो एक तरफ से अगर गाड़ी जाओगे तो दूसरी तरफ से गाड़ी आ नहीं सकती है। तो फाइनली एंड ऑफ द डे आपका पेट्रोल लॉस हुआ, आपका नेचुरल रिसोर्स लॉस हुआ, आपका टाइम लॉस हुआ, लेकिन हु केयर्स? लेकिन जीएस केयर्स फॉर ऑल दोज natural resources, cares for all the time loss, and it provides a decision support system to each and every planner। चाहे आप वाटर इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग हो, तो आपको बनाना आर्टिफिशियल रिचार्ज साइट्स बनानी है, तो कहाँ जाके, कहीं भी तो गड्ढा नहीं खोल दोगे, कहीं भी डैम नहीं खड़ा कर दोगे, कहीं भी रिजर्वायर नहीं बना दोगे। तो आपको एक डिसीजन सपोर्ट चाहिए, जहां की वो बताएगा कि कौन सबसे सुटेबल साइट है, फिर जाओ अपना फील्ड में उसको वेरीफाई करो, वैलिडेट करो, अगर है तो फिर बनाओ भाई। तो उसमें सबसे अच्छा टूल जो है वो आपका मैप ओवरले ऑपरेशन है, जिसमें तुम देख सकते हो कि कितनी आसान से, जितने भी मैंने डेफिनेशन दिया उससे तुमको लाइन है, कौन कौन सा रोड है जो अनऑथराइज है, कौन कौन सी बिल्डिंग अनऑथराइज है। आजकल प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शंस में भी यूज होता है जीआईएस की, आप डायरेक्टली बता सकते हो। तो ये ऑपरेशन देखो, जो कॉमन ऑपरेशन है ओवरले का, वो पॉइंट इन पॉलीगॉन ऑपरेशन है, वो लाइन इन पॉलीगॉन ऑपरेशन है, वो तुम्हारा पॉलीगॉन इन पॉलीगॉन ऑपरेशन है। तो पॉइंट इन पॉलीगॉन ऑपरेशन जब भी यूज करोगे ये ऑपरेशन, की मान लो एक पॉइंट है और उसको पॉलीगॉन से ओवरलैप दे रहे हो, तो क्या होगा, असाइंस ईच हाउस पॉइंट द एसोसिएटेड स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स विद अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने पहले ही ये बता चुका, इसलिए आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल। फिर पॉइंट एंड पॉलीगॉन्स, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या रीजन है, कौन स्कूल के बगल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर ये लाइन है कि हम देखना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, सॉइल में मेरे को ये बनाना है डैम, तो मुझे वो बता देगा
कि लीनियामेंट है, यहाँ पर वाटर स्ट्रक्चर अच्छे बन सकते हैं, तो मेरे को वो आइडेंटिफाई करके मैं पर्टिकुलर अगर सॉइल टाइप लिख दूं कि इस सॉइल टाइप में मेरे को बता दो, तो वो सॉइल टाइप का सारा हाईलाइट करके इनफिल्ट्रेशन रेट बता देगा। तो देखो हमको जैसे वो कमांड हमने रन किया, ये पूरा उसका डेटाबेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा, एज वेल एज स्पेशल में वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर पॉलीगॉन इन पॉलीगॉन है, जो कि हम लोग डिफरेंट, चाहे कोई भी स्टडी आप करते हो, जितने भी पेपर्स बनते हैं वो ज्यादातर यही स्टडी है कि 10 लेयर्स बनाओ और फिर ओवरले करो, और सबको अगर मेरे को पानी ढूंढना है तो जब मैं 10 लेयर को करूंगा तो ऐसे लेयर्स आएंगे जो जियोलॉजी के लिए भी फेवरेबल है, जियोमोर्फोलॉजी के लिए भी फेवरेबल है, स्लोप के लिए भी है, एस्पेक्ट के लिए भी है, वाटर टेबल के लिए भी, रेनफॉल के लिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि किस पोर्शन में करना है। तो फायदा ये हुआ कि तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट छोटा हो गया। अगर आज मैं बोलूं कि भैया पानी कहाँ मिलेगा, आपको डैम बनाना है, आप बोलोगे मेरे को क्या पता। लेकिन जब आपने जीआईएस को यूज कर लिया, जब आपने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया, तो हम साइंटिफिक बताएं। जैसे इंडिया में बहुत जगह क्या होता है, जब पानी ढूंढना रहता है तो वो एक आदमी को बुलाते हैं, वो ऐसे करके चलता है, और वो मतलब साइंटिफिक नहीं, लेकिन आदमी उसको विश्वास करते हैं। फिर एक थाली में एक नारियल लेके आता, उसको विश्वास करते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड वी हैव गॉट अ मोर प्रिसाइज 100% एक्यूरेट, बट कोई इसको करता नहीं है। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इसी के बेस पे करती हैं, वो उन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे सारे डेटाबेस एक के ऊपर एक ओवरले करके सारी प्रॉपर्टीज इंटैक्ट हो जाती हैं। तो दो ऑपरेशन सबसे कॉमन होता है जब हम ओवरले करते हैं कभी भी जीआईएस इन्वायरमेंट में। तो एक है यूनियन, दूसरा इंटरसेक्ट। तो आप देखो यूनियन मतलब कि हम और कोई और दोस्त, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी रहेगी। मतलब मान लो इंडिया का, जैसे मान लो राजस्थान की प्रॉपर्टी एंड बिहार की प्रॉपर्टी दोनों एक है, हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं। लेकिन इंटरसेक्स मीन्स मतलब दोनों की जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी वही होगी, बाकी डिस्क्रीट हो जाएगी। तो जब भी मान लो कि हमें कोई ऑपरेशन करना है जहां की मुझे लैंड यूज के भी फीचर चाहिए, जहां मुझे उसकी भी प्रॉपर्टी चाहिए, और मुझे जियोलॉजी की भी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे जियोमॉर्फोलॉजी, मेरे को कुछ भी डिलीट नहीं करना, ना उनके शेप फाइल ना उनका एट्रीब्यूट, सब एक साथ चाहिए, तो आपको ऑपरेशन रन करना पड़ेगा इंटरसेक्ट। दूसरा मेरे को एक ऑपरेशन करना है जिसमें मेरे को सिर्फ जो कॉमन फीचर्स हैं, अगर दो एरिया देखोगे उसी का मुझे चाहिए, तो फाइनली ये एट पॉइंट आउटपुट ये मिलेगा। तो इंटरसेक्ट का एंड पॉइंट होता है कॉमन एरिया, यूनियन का एंड रिजल्ट होता है ऑल द एरियाज। सो अगर आप ये देखो, इंटरसेक्ट मीन्स सिर्फ कीप द कॉमन बाउंड्रीज, यूनियन मीन्स कीप ऑल द एरियाज, वो कुछ भी हो सब चीज रखेगा। समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। यूनियन एग्जांपल देखो, ये दो जियोलॉजिकल एंड सॉइल मैप है, दोनों को हमने यूनियन कर दिया, तो अब कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसके बाद जो तुमको करना है वो कर लो। और एक हाई रिस्क लैंडस्लाइड का बता सकते हो कि जहां पर स्लोप ज्यादा होगी, जहां जियोलॉजी एलुवियम है, वहां सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है। तो आपको अभी पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया है। और इंटरसेक्ट में है कि आपको देखना है कि कौन सा एरिया रेसिडेंशियल के अंदर में कोई पर्टिकुलर फॉर्मेशन में फ्लोराइड कंटामिनेशन ज्यादा मिलता है। तो जब आप इंटरसेक्ट करोगे तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जगतपुरा में कोई ऐसा रिसोर्स तो नहीं है, फॉर्मेशन है जहां की घर बना हुआ है कि उसमें फ्लोराइड कंटामिनेशन ज्यादा है, तो उसको अगर मैं करूंगा तो इंटरसेक्ट से मुझे वो मिल जाएगा। मेरे को बाकी किसी का मतलब नहीं है कि जयपुर में क्या हो रहा है या बस्सी में क्या हो रहा है। तो ये ऐसे करेंगे। और ये सब ऑपरेशंस को मिलाते हुए हम लोग हैजार्ड मैपिंग कर सकते हैं। तो देखो कि कौन कौन से एरिया ये बता रहा है जो अपाची फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा फ्लोराइड कॉन्टेमिनेशन है। फॉर एग्जांपल ये सारे रेसिडेंशियल एरिया है, तो फाइनली ये रेसिडेंशियल एरिया ये जो है ओपची फॉर्मेशन के नीचे अगर ओवरले कर दिया तो हमें पता चल गया कि कितने रेसिडेंशियल एरिया उस ऑपची फॉर्मेशन के आते हैं, और कितने लोग हैजार्ड में हैं और कितने लोग एट रिस्क में हैं। तो ये ब्यूटी है जीआईएस का, जहां कि आपको एक फाइनल डिसीजन सपोर्ट, अब किसी को मान लो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट एक्स एंड वाई है, एरिया है, लेंथ है, सब चीज है। अब प्लानर्स इस पर डायरेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे ही आप हैबिटेट सूटेबिलिटी के लिए कर सकते हो कि किस हाइट पे कौन से स्टोन पे कौन सा फॉरेस्ट होता है, एंड फाइनली ये सब मिलके कौन से पर्टिकुलर हैबिटेट, चाहे तुम टाइगर की बात कर रहे हो तो उसका हैबिटेट अलग है, एलिफेंट की बात कर रहे हो तो उसका हैबिटेट अलग है,
अगर तुम क्रोकोडाइल्स की बात कर रहे हो तो वो हैबिटेट अलग है। तो आजकल तो कल ही मेरे पास एक पेपर आया था जिसमें कि पैस्चर्स ग्रेजिंग पे था। तो मैं बोला कि पढ़ता हूँ, रिव्यू करता हूँ क्या है, तो बहुत ही बढ़िया किया था। वो लोग देखना चाह रहे थे कि ये पैस्चर्स ग्रेजिंग में सिप का कोई पैटर्न है, कितना एरिया तक जाते हैं और कितना पर डे कंज्यूम करते हैं, उनका कोई स्पेशल पैटर्न है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया भाई, रेडियो कॉलर लगा दिया उनके गर्दन में और 2 सीजन का उन्होंने रिकॉर्ड किया। और वो देखना चाहते थे कि क्या क्लाइमेट चेंज या जो पैस्चर ग्रैंड इनको मिल रहा है, इन चाइना का पेपर था वो आया था मेरे पास, तो वो जो कर रहे हैं उसमें कोई उनको सफिशिएंट स्टॉक है कि नहीं है। तो इस लेवल तक जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग में अब सिर्फ पानी ढूंढना या स्मार्ट सिटी तक सीमित नहीं है अब जीआईएस। लेकिन वो तभी होगा जब ये सारे ऑपरेशन, चाहे इंटरसेक्शन हो चाहे यूनियन हो, आप इसको यूज करना जान सके, आप इसके आउटपुट को जान सके कि एट एंड ऑफ द डे अगर मैं पॉइंट को पॉलीगॉन के साथ निकालूंगा तो क्या मिलेगा। अगर मान लो इतना बड़ा एरिया है, ये मेरा पॉलीगॉन है, मुझे रोड काटना है इसके अंदर से, एक लाइन फीचर है और एक पॉलीगॉन फीचर है। पॉलीगॉन फीचर हो गया मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री। तो रोड है, मान लो ये पूरे राजस्थान का रोड है, अब मुझे जयपुर से मतलब है, तो बार बार मैं क्यों खोलूंगा भाई राजस्थान का, मुझे तो सिर्फ जयपुर का है। तो मुझे क्या करना होगा, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को काट के निकालना। तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को काट के निकालना, तो हमने काट दिया भाई, लो काट के इंटरसेक्ट कर दिया, वो काट के रोड अलग से निकल गया। अगर सेम चीज का कोई पॉइंट फीचर तुम्हें चाहिए था, काट के निकालना था, बहुत सारे लेबल्स थे, एरिया आइडेंटिफिकेशन जो बेस मैप के लिए तुमको जरूरत पड़ता, उसको हमने यूज के काट के निकाल दिया। फिर कॉमन जो ओवरले ऑपरेशंस जो हम लोग जीआईएस में करते हैं, वो देखो वो कौन सा है, क्लिप। क्लिप है और इरेज। तो अगर आप देखो क्लिप, ये इनपुट है, ये तुम्हारा आउटपुट है, मतलब 2 लेयर्स हैं। और तुमको चाहिए कि ये जो छोटू वाला है, ओवरले वाला जो अपन बोल रहे हैं, हमको उसी में ये इनपुट और दोनों की प्रॉपर्टीज चाहिए, इतने ही दूर का चाहिए। तो हम लोग ऑपरेशन कौन सा करेंगे, क्लिप। क्लिप इज मोर काइंड ऑफ अ सबसेट, मतलब बड़ा से छोटा को काटना है। मान लो इंडिया की पूरी लैंड यूज, लैंड कवर है तुम्हारे पास, और कोई तुमको बोल रहा है कि पंजाब का काटना है, तो आप पंजाब का क्या करोगे, आप शेप फाइल डालोगे और जो इनपुट फाइल डालोगे इसका क्या बोलते हैं इंडिया का, वो काट के आपको पंजाब का सिर्फ दे देगा। तो वो ऑपरेशन उस टाइप का करना है, तो आपने ऑपरेशन चलाना क्लिप। मान लो कि बीच में आपको डेटा को डिलीट करना, बाकी डेटा चाहिए, मतलब सिर्फ पंजाब का मुझे नहीं चाहिए। जैसे क्या होता है कि जब भी हम लोग काम करते हैं रिमोट सेंसिंग एंड जीएस में, तो बहुत सारे होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब जहां मिलिट्री है, तो उसको ना अपन क्या करते हैं, अगर मान लो स्टडी कर रहे हो और वहां रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, मान लो कि मिलिट्री कोई बेस है, एयरपोर्ट है, या कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जो तुम मिलिट्री पर्पज से आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, तो आप अपने मैप में वो नहीं दिखाओगे। उस एरिया को जो तुम्हारा रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्री जो गवर्नमेंट ने बना रखी है उसकी, कि उसका आप कहीं भी यूज नहीं करेंगे, उसको काट के हटाना है। तो अब उतना दूर का सिर्फ काट के जो हटाना है, ब्लैंक करना है, उसको कैसे होगा, तो उसको काटने के लिए सिर्फ उस एरिया का हम लोग क्या करेंगे, उसका शेप फाइल डालेंगे, और बीच से उसको, मान लो कि बड़े एरिया में बीच में तुम्हारा पैच आ गया, बीच में कि फॉरेस्ट में काम कर रहा हूं, बीच में उसका पैच आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, उसको काट के बीच से हटा सकते हो। तो जो ऑपरेशन जिसके थ्रू वो कट के निकल जाएगा, दैट इज नोन एज इरेज। फिर इंटरसेक्शन यूनियन तो हमने पहले ही बता दिया। फिर तुम्हारे बहुत सारे क्लिप कटर हैं, जैसे ये देखो, जैसे कैसे है कि बड़ा है, जैसे पहले मम्मी लोग बनाती थी शेप साइज, तो ये तुम्हारा क्लिप और इरेज का सबसे बढ़िया है कि क्लिप का देखो, एक बड़ा सा आटा था, उसमें एक डिजाइन बनाया, तो एक छोटे से आटा में बन के वो डिजाइन बन के वो आ गई। और इरेज का है कि एक बड़ा है और बीच में छोटा काट के तुमको हॉलो करना है, बाकी चाहिए, तो ये तुम्हारा डोनट्स बन गया। कोई दिक्कत है क्या समझने में? नो सर। समझ में आ गई? यस सर। सर फिर यस बस सर। ये डिसॉल्व करना है। अब डिसॉल्व करना है, मान लो बहुत सारे प्रॉपर्टीज में है, तुमको डिसॉल्व करके एक बनाना है। जैसे बहुत सारे लैंड यूज के कैटेगरीज बनना है, तुम चाहते हो कि पूरा जितने भी कैटेगरीज है सिर्फ एक ही दिखा है, जैसे उसमें लिखा हुआ है रेसिडेंशियल, कमर्शियल, लेवल 4 तक किया हुआ है मान लो, ठीक है ना, या लेवल लेवल 4 से लेवल 1 तक लाना है, या लेवल 1 से लेवल 4 तक लाना है, तो वो सारी ऑपरेशन हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखो डिसॉल्व, जो अभी मैं बता रहा था कि अगर मान लो इतने सारे तुमने डॉट 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 बनाया और आपने ठीक से क्लोज नहीं किया, तो क्या होगा, एक ही रोड में देखो कितने सारे नाम्स आ गए। एक ही नाम आना चाहिए ना भाई, ये कितने नाम आ रहे हैं, मेन स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट, क्योंकि ये स्नैप
ठीक से नहीं किया आपने, ज्वाइंट ठीक से नहीं किया, तो उसको वो क्या किया, अभी सिंगल आइडेंटिटी नहीं दिखा रहा, वो आपको अभी डिफरेंट 4 आइडेंटिटी दिखा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, सबको सेलेक्ट करो और डिसॉल्व कर दो। फिर वैसे ही मान लो इतने सारे क्लासेस हैं यहाँ, ए बी सी डी, बहुत सारे क्लासेस, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को जनरलाइज क्लास चाहिए, मेरे को कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए भाई। मैं बोलूंगा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड, सिंप्लीफाई करो। बहुत बार आदमी बोलता है कि सिंप्लीफाई करो चीजों को। तो क्या है कि बहुत ज्यादा इन डिटेल्ड है, और चीजों को सिंप्लीफाई करना उसी कैटेगरी में जिसके बेस पे वो था। अब जैसे मान लो ये लाइन है बी, बी में देखो कि बीच बीच में लाइन दिखा रहे हैं, एफ में भी बीच में दिखा रहे हैं, तो ये अलग प्रॉपर्टीज है ना, सेम प्रॉपर्टीज में बीच में लाइन नहीं आनी चाहिए। बी मतलब देखो पूरा बी है, तो उसके बीच में कोई भी लाइंस नहीं आएगा, तो उसको क्या करना है, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, सबको मर्ज करना पड़ेगा। आइदर यू डिसॉल्व इट और यू मर्ज इट। अदर ऑप्शन है सेलेक्ट करो, मर्ज करो। सेलेक्ट करो, बी में 2 बाउंड्री बना दिया। बहुत बार क्या होता है कि तुम डिस्टाइज करते चले गए और 2 बाउंड्री में छूट गया, मतलब एक में तुमने नाम दे दिया एग्रीकल्चर, दूसरा पॉलीगॉन भी है बगल में एग्रीकल्चर, लेकिन तुमने नाम नहीं दिया, तो फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है। जो एग्रीकल्चर में आपने पहले नाम दिया हुआ था, दोनों पॉलीगॉन को सेलेक्ट करो, और वहां ऑप्शन आता है मर्ज। मर्ज करोगे तो ऑटोमेटेड वो जो बी की प्रॉपर्टी जो अनडिफाइंड थी उसमें डिफाइन हो जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा मर्ज ऑप्शन, जहां की आप बहुत सारी चीजों को मर्ज करके एक एट्रीब्यूट बना सकते हो। डिसॉल्व तो मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे डिसॉल्व करना है। फिर बफरिंग, बफरिंग मैंने बताई है कि मान लो कि ये रोड है, अब इस नदी है, अब क्या किया कि सबने, द्रव्यवती नदी है जयपुर में, सबने इलीगल घर बना दिए, सबने इलीगल फैक्ट्रीज बना दी, और इसके पूरे कैचमेंट को आपने खत्म कर दिया, जिसके कारण ग्रेजुअली नदी सूखने के कगार पे है। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, इसको रिवाइव करना है। तो उन्होंने मान लो कि 1-1 किलोमीटर का बफर निकाला, बोला ये रिवर बाउंड्री है भाई, ये नेचुरल बाउंड्री है, चलो अपना घर निकालो और सब चीज है, आप इलीगल जमीन पे हो। तो वो लोग नहीं मानेंगे, कोर्ट पे जाएंगे। तो हमारे पास स्पेशल डेटाबेस है जहां दिखा सकते हैं कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आपने इलीगली बनाया है, चाहे कितना भी। अभी बीच में ही आया था यहाँ, अब यूपी में था कि कहीं, कि लोगों ने पार्क में घर बना दिया, तो वो सबका, किसी का 2 करोड़, किसी का 10 करोड़ का घर थे, तो गवर्नमेंट तो तोड़ दिया, जो है सो है नियम। तो वो नियम कैसे पता चलेगा कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हो वो सही है कि गलत है, कैसे डिफाइन करेगा? तो जीआईएस का इस्तेमाल करते हैं, बफरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जहां की आप देख सकते हो कि ये बफर आपको हेल्प कर रहा है, एक एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एरिया बताने के लिए, और एक डिमार्केट करना कि कौन एरिया से बाहर है। तो आराम से ये जो बाउंड्री बनी 500 मीटर का, आप इसको ओवरले कर सकते हो अपने लैंड यूज लैंड कवर पे, और आप देख सकते हो कि कितने घर, कितने खेत, कितना क्या कंपनसेशन देना है, जो भी देना है। जैसे अभी मान लो कि अभी हमने देखा है कि वहां बना ना कॉरिडोर हुआ है अभी विश्वनाथ जो बनारस में, तो अगर सैटेलाइट इमेज देखोगे तो चेन डिटेक्शन दिखा रहा है कि पहले कितना कंजेस्टेड बिल्डिंग्स और ये थे, क्या बोलते हैं, घर, रेसिडेंशियल एरियाज थे, लेकिन अभी बहुत ही सुंदर कॉरिडोर मंदिर के लिए जाने के लिए मिला। तो गवर्नमेंट ने कैसे किया होगा, एक प्लानर ने प्लान दिया होगा, फिर उसमें एरिया डिमार्केट किया होगा, फिर उसमें क्या किया होगा, उसमें गवर्नमेंट ने देखा होगा कि कौन है जो कि गवर्नमेंट के जमीन में है घर बनाए, तो उनको तो नोटिस देके आपको तुरंत तोड़ना है, उसके लिए तो कोई कंपनसेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि किसी का आप रीशिफ्ट करना चाहते हो, कि आप बोल रहे हो कि भैया यहाँ से हट जाओ, यहाँ गवर्नमेंट की कुछ होने वाली है, आप वहां चले जाओ, वहां इस एरिया पे आपको इतना कंपनसेशन मिलेगा। तो लेकिन गवर्नमेंट को तो ये सारा डीपीआर बनानी पड़ेगी ना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, काम करने से पहले, क्योंकि तभी तो फंड एलोकेट होगा ना, कि कितना कंपनसेशन में देना होगा, कितना बनने में लगेगा। तो वो बनने के दौरान फंड रिलीज नहीं होता है, पहले ही इन डिटेल स्टडीज होके वो होती है, जिसमें कि फाइनल आपको है कि ये सारा कंस्ट्रक्शन, लेबर, ये रीसेटलमेंट, पानी और ये सब चीज मिला के डिफरेंट एजेंसी मिलके पूरी फंड देती है कि भैया ये 5,000 करोड़ रुपया लगेगा। अब आपको जितना भी काम है वो 5,000 करोड़ के अंदर में ही करना पड़ेगा, 5,001 रुपया करोड़ 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो उसमें ये रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस हर आजकल हर जगह काम आती है आपको। वैसे ही आप ये अपेंड कर सकते हो अपने फीचर्स को। ये देखो मर्ज, जो मैंने तुमको बताया कि 2 इनपुट है, ये तुम्हारे 2 आउटपुट है, अगर तुम इसको फंक्शन को मर्ज करोगे तो दोनों एक मिल जाएगा।
फिर ओवरले एनालिसिस है, स्लाइवर्स, जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि बाउंड्री के अलोंग जब आप पॉलीगॉन बनाते हो तो ये देखो छोटे छोटे से ना पॉलीगॉन बन गया, अगर आप बड़ा गौर से देखोगे तो काला रंग का छोटे पॉलीगॉन्स, तो ये स्लाइवर्स है। तो ये टोपोलॉजिकल एरर्स है, इनको हमें हटाना है अपने मैप से। मैप फाइनली तो देखो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो इनको टोपोलॉजिकल फंक्शन करके और हमें हटाना है। एंड फाइनली ये पूरा सब हम लोग जियो प्रोसेसिंग करते हैं जीआईएस में, जहाँ की आप जाओगे ये जियो प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट है, जहाँ की आप अगर आर्क टूल बॉक्स में जाओगे तो ये आर्क टूल बॉक्स का है, तो ये आर्क का नहीं बताऊंगा बिकॉज इट्स अ प्रोप्राइटरी, सो आई विल स्कीप। So you have got this menu bars, tool bars for clip। तो जियो प्रोसेसिंग विजार्ड इसमें भी होगा QGIS में, जहाँ की आप जैसे जियो प्रोसेसिंग में जाओ तो देखो अभी जितने भी फंक्शन मैंने बोला है एक ही टूल बार में आपको मिल जाएगा, जहाँ की बफर भी है, जहाँ की क्लिप भी है, जहाँ की इंटरसेक्शन भी है, जहाँ के यूनियन भी है, जहाँ का मर्ज भी है, जहाँ का जी डिजोल्व भी है। पाइथन स्क्रिप्ट अगर लिखना है तो पाइथन स्क्रिप्ट के लिए राइटर के लिए वो प्लेटफॉर्म दे रखा है। मॉडल बिल्डर अगर आपको कोई मॉडल बनाना है तो वो बना सकते हो, आप सारा कुछ बना सकते हो यूजिंग दिस टूल बार इन जियो प्रोसेसिंग इन GIS environment। Same चीज you can do in QGIS too। Today we'll be doing this kind of analysis in second half, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल है। तो वैसे ही आप क्लिप मर्ज और ये सारे ऑपरेशन ArcGIS में भी कर सकते हो, QGIS में भी कर सकते हो। आप इन्वायरमेंट देख ही रहो कि कैसे ये पूरा इन्वायरमेंट में सेट है चीजें, तो आप सारा ये डिफाइन करके अपनी सारी चीजें आप कर सकते हो। ये टॉलरेंस है जो सेट करना पड़ता है जब आप टोपोलॉजिकल ऑपरेशन देते हो। तो देखो ये बीच में गैप है, ये दो पॉलीगॉन है जो ठीक से ये अंदर दोनों को मिक्स होना चाहिए था, ओवरलैप होना चाहिए था, और ये बीच में गैप है। तो अब तुमको टोपोलॉजी क्रिएट करके एक टॉलरेंस देना होगा जिससे कि ये दोनों एरर ठीक हो जाए। अभी तो अगर आप गौर से टोपोलॉजी नहीं बनाओगे तो आपको ये दिखेगा ही नहीं कभी, क्योंकि ये ज्यादातर पॉलीगॉन्स जब आप बनाते हो तो आपके साथ ऑटोमेटेड ये और स्लाइवर बन ही जाता है, चाहे आप कितना भी आप कट पॉलीगॉन कर लो या कितना भी ऑटो कंप्लीट पॉलीगॉन कर लो, ये अलोंग द बाउंड्रीज हो ही जाता है बाय डिफॉल्ट। और वो आपको दिखता भी नहीं, इतना माइन्यूट है कि जब आप पूरे सबको लेबल दे दोगे, जब आप उसको सेलेक्ट करोगे कि जो अनलेबल्ड है, तो जैसे मान लो 50,000 पॉलीगॉन आपने बनाया है तो उसमें 5,000 ऐसे पॉलीगॉन आ जाएंगे जो अनक्लोज्ड, अननेम्ड और अनलेबल्ड है। तो वो हेडक रहता है, वो आपको ठीक करना है, और वो जब तक टोपोलॉजी आप क्रिएट नहीं करोगे वो हेडक खत्म नहीं होगी और आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसको ठीक किए हुए आप किसी को गलत डेटा नहीं दे सकते हो। तो उसके लिए टोपोलॉजिकल पूरा टॉलरेंस देना पड़ेगा आपको कि कितनी टॉलरेंस सेट करनी है, वो आज प्रैक्टिकल में आप सीखेंगे। और फिर उसके बेस पे ये जितने भी एरर्स अभी हमने देखा है वो सारा, चाहे 500 मीटर का, 1000 मीटर का, 1500 मीटर का, तो वो हर के लिए अलग है। मतलब ऐसा कोई डिफाइंड टॉलरेंस आप नहीं बोल सकते कि इतना टॉलरेंस दे दो और आपका चीजें ठीक हो जाएगी। वो आपको चेक करना पड़ेगा अपने इमेज में, अपने शेप फाइल में, कि वो कितना एग्जैक्ट टॉलरेंस उस इमेज के लिए तुम्हें देना है। बहुत ज्यादा दे दोगे पूरा फीचर चेंज कर देगा, तो वो भी गलत है। तो हमेशा जब भी ये करना है, आप जब भी टोपोलॉजी बनाओगे हमेशा उसके बनाने से पहले आपने जितना भी काम किया है उसको स्टोर करके रख लेना एज ए सेपरेट फाइल। नहीं तो बहुत बार क्या होगा कि अगर आपने स्टोर नहीं किया और आपने उस पर चला दिया और उसमें कोई गलत कमांड आपने चला दी तो डेटा रिट्रीव नहीं होगी, जितनी भी आपकी मेहनत है। मान लो कि 6 महीना से तुम एक पर्टिकुलर कोई शेप फाइल में काम कर रहे हो, फाइनली कंप्लीट हुई और आपने उसका बैकअप नहीं रखा और आपने टोपोलॉजिकल कोई गलत कमांड रन कर दिया, तो वो तुम्हारा पूरा शेप फाइल इम्बैलेंस कर देगा, चेंज कर देगा। फिर तुम चाहोगे रिकवर करना तो वो होगा नहीं, बिकॉज कि आपको एक हमेशा न्यू फाइल देनी है। तो ये सारे ऑपरेशंस आप आज करोगे, क्योंकि ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर में, इसलिए मैं इसको स्किप कर दूंगा। QGIS में हमें करना है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको हटाता हूं। मैं दे दूंगा, कोई अगर इसमें भी इंटरेस्टेड है तो वो ये सारे मॉडल स्क्रिप्ट जियोस्पेसिंग विजार्ड में देख सकता है। तो विद दिस आई विल बी स्टॉपिंग माय प्रेजेंटेशन। होप कि मैंने बोर ना ही किया है किसी को। एनी कमेंट्स? अरे इतना 2 घंटा बोला, कोई कमेंट तो दे दे भाई। सर बड़ा अच्छा था सर, काफी मजा आया सर। एक क्वेश्चन था सर। ठीक है, अब ये पूछेगा तो चलो पूछो।
सर वो जो कल रीत सर ने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी उन्होंने एक केस स्टडी में मास्क टूल का यूज किया था, हाँ 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 जिसमें उन्होंने रेजिडेंशियल वाले एरिया को हटा दिया था। हाँ हाँ। तो वो वाला फीचर और इरेज टूल सर सेम है या डिफरेंट है थोड़े? नहीं नहीं, दोनों उसमें देखो बता दीजिए थोड़ा। बहुत बार ना अलग चीज है। देखो साइनोनिम्स भी है, डिफरेंट भी है, डिपेंड करता है कि वो किस समय तुम क्या करते हो। ठीक है ना। बहुत जगह मास्क जैसे क्लाउड कवर आ जाता है हमारा, ठीक है ना, तो उसको मास्क यस करना सर। पड़ता है। बहुत जगह मैंने तुम्हें बोला कि कैसे रेसिडेंशियल, जैसे डॉक्टर श्रुति ने पीएचडी किया था, तो उनका जो स्टडी एरिया में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेसिस थे, तो आप उसको कभी भी जब पब्लिकेशन करोगे तो नहीं दिखाना है, तो उसको मास्क करना पड़ा हमें, ठीक है ना। तो उसको मास्क बोलो, इरेज बोलो, मेनी टाइम्स इट्स साइनोनिम। जैसे जैसे तुम काम करोगे वैसे वैसे आपका एक्सपर्टाइज क्लियर होते जाएगा कि अप्रोप्रिएट, जैसे इंग्लिश का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं कि बहुत यस बार सर। इस टर्म के साथ ये यूज कर लूंगा तो ज्यादा मतलब साउंड फील करेगा, वैसा है। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई? हरीश, सुनील, एनी क्वेश्चंस? सर हरीश जी कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। हरीश जी आपको नहीं सर, थैंक यू सर। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो एक दिन में तो मुश्किल है सब समझना, लेकिन फिर भी मैंने मेजर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिस स्टाइल सर आप हाँ समझाते हो हाँ। सर, आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्टाइल। अरे मैं तो ऐसा होता मैं इतने मेरा। रिसोर्स पर्सन भी आते हैं, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। इतने रिसोर्स पर्सन भी अगर हम उनको भी सुनते हैं, हाँ। लेकिन लास्ट में जो आप ब्रीफ कर देते हो फिर उसको उस स्टाइल में ले जाते हो अपनी वाली में, वो दैट्स वेरी नाइस सर। थैंक यू थैंक यू। तो वो ना मैं हमेशा सोचता हूँ कि एट एंड ऑफ द डे मेरे को मेरे टीचर ने समझाया था ना, जब मैं टॉपर हूँ अपने यूनिवर्सिटी का जियोलॉजी में, मास्टर्स में जी भी। जी। मेरा लास्ट में कुछ हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मैं सबसे लास्ट आया, नहीं तो मैं टॉपर्स की लिस्ट में था। तो वो हमको मैं कुछ समझाते थे कि देख सूरज, ऐसा है ना कि एक बार अगर तेरे दिमाग में छप गई ना चीज, कॉपी पेन में अगर तू डेली आता है ना, तू कॉपी में आएगा, लिखेगा, कॉपी फेंक देगा घर पे, अगले दिन जाएगा सोएगा, फिर उठा के कॉपी लेके आ जाओ, तो दिमाग में आपकी चढ़ी नहीं। लेकिन एक बार अगर चीज तूने समझ ली ना, दिमाग में चढ़ गया, तो तुम अपने आप से उसको रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि दिमाग क्या है, जस्ट लाइक एक प्रोसेसर है, जो क्वेरी करते हो वो आपको इंफॉर्मेशन देता है। बेस्ट एग्जांपल है हम लोग तो, मतलब रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का जीता जागता हम लोग ये है, मतलब एग्जांपल है आप बोल सकते हो। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब मैं समझता भी था, तो जैसे मान लो कि मेरे को कोई बोलता था जैसे फॉसिल्स है, तो फॉसिल्स हमारे को आता था, अलग अलग फॉसिल्स हैं, तो मैं कैसे पहचानूं कि कोई हर दिन सर नया सैंपल दे रहे हैं, हर दिन नया सैंपल दे रहे हैं, और एंड ऑफ द डे जब एग्जाम में लाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर फॉसिल ले आएंगे, तो मैं कैसे समझूं कि कौन वाला फॉसिल, क्योंकि उसकी पूरी प्रॉपर्टी, फाइलम नेम, उसका क्लीवेज, टेक्सचर, प्रॉपर्टीज, डीप स्ट्राइक, सारा कुछ लिखना। तो मैं क्या करता था, अपना उसको निक नेम देता था समझने के लिए, खुद ओके। से समझने के लिए। तो वो मुझे क्या लगा ना कि जब भी मैं निकनेम देता था किसी एक फॉसिल को, अपना अपने समझने के लिए, मैं ना दोस्तों को बुलाता बताता था, ना किसी को, एक दो को बताता था, देख मैंने ये नाम दिया, ऐसे दिखेगा ना, तो ये वाला प्रॉपर्टी होगा, लिख देना। तो जब भी मैं एग्जाम में जाता था, तो मुझे क्या लगा कि जब भी बाकी लोगों को, जब मैं स्टूडेंट को देता था, वो भले क्लास में बहुत ही जो स्पेशली लड़कियां थी हमारी क्लासमेट, वो बहुत ज्यादा एक्टिव और सर को इम्प्रेस करती थी, लेकिन जब एग्जाम में आता था तो मैं देखता था कि वो कंफ्यूज हो गई, और मेरे को पता था कि मैंने इसको क्या निकनेम दिया हुआ, तो मेरे को पता है सटीक कि मेरे को क्या लिखना है इसमें, और वो उसी में गलत प्रॉपर्टी लिख देती थी और मैं सही प्रॉपर्टी लिखता था। तो बहुत बार जैसे मेरे ब्रदर ने बताया कि इंग्लिश ठीक लिखना है अगर, तो आप प्रोनाउंस करो वही जो आप बोलना चाहते हो, मन में वही बोलो जो तुम लिखना चाहते हो। तो जैसे कर्नल स्पेलिंग हुआ, कर्नल एक स्पेलिंग है, कोई स्पेलिंग बताएगा कर्नल का? तुरंत तुरंत कर्नल का स्पेलिंग एनीबॉडी? सी सर ओ कॉलोनल होता है वैसे एल तो ओ बाय एन ई स्पेलिंग। एल तो मैं उसको कोलोनेल पढ़ता हूं, तो जब मैं कोलोनेल पढ़ा, तो मैं भले मैं बोल रहा हूं कर्नल, लेकिन जब मैं लिखता हूं तो कोलोनेल लिखता हूं। जब मैं केमिस्ट्री बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं लिखता हूं मैं केमिस्ट्री लिखता हूं। जब मैं लिखता हूं लेफ्टिनेंट, मैं लिखता हूं ल्यूटिनेंट। तो
इस टाइप से बहुत बार ना आपको अगर लाइफ में आगे है तो आपको अपने मेथड स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा कि जिससे कि दिमाग में वो स्टोर रहे कि 10 या 12 साल बाद भी मैं उसको रिट्राइव करूं तो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दे दे आपके स्क्रीन पे। स्क्रीन आपकी जुबान है, आपका थॉट है। तो वो तभी होगा जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे किसी चीज को मास्टरी पाने के लिए। एक तो होता है कि चलो भैया नौकरी लग गई है, प्रमोशन चाहिए, नहीं हो रहा है तो डॉक्टरेट कर लो, किसी को आगे जाना है रिफ्रेशर कोर्स कर लो। लेकिन कुछ होता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं तो अपन तो उसी के लिए करते हैं, ठीक है ना, लाइफ में आगे बढ़ना। तो इसी के साथ मैं अपना आज का ये लेक्चर ऑन स्पेशल एनालिसिस मैं खत्म करूंगा। होप दैट ईच एंड एवरीबॉडी एंजॉयड माय लेक्चर and again by 2:05 again we'll be meeting for your practical on spatial queries using QGIS software. Till then, take care, bye, have your day. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. Suraj, thank you so much. Thank you. कोई तो थैंक यू बोला मुझे। थैंक Thank यू you सर। very much, sir. Thank you very much. It was very, very informative, sir. मैं भी आज बहुत ध्यान से सुन रहा था GIS का, आप जो बता रहे थे। अरे अरे चलो थैंक यू। एट एंड मुझे ऑफ भी द डे GIS का थोड़ा सा रिकॉल हो गया, काफी दिनों से GIS का मैं तो इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव लेक्चर नहीं सुन पाया अभी तक, बहुत दिनों से। हाँ नहीं, बहुत अच्छा रहा। रिफ्रेशर कोर्स का यही मतलब है ना, रिफ्रेश हो जाता है। हाँ, बोलो बोलो। तो मेरा भी पूरा जो भी चीजें पुरानी थी सब रिकॉल हुई, अब बहुत अच्छा लगा सर। थैंक हाँ, मेरी PhD स्पेशली मेरी PhD आज रिकॉल हुई है। हाँ सर, कई बार चीजें हम लोग करते नहीं है, हम लोग करके छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, बट आज काफी चीजें क्लियर हुई, कुछ याद आया, पुरानी चीजें जो पढ़ते थे। बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो थैंक यू, सी यू ऑल एट 2:05। ओके बाय, चलो।